Hello everyone, how are you? Good to see you guys back on Saturday. I see a lot of you have joined today. Good to see so many people on time. I see Akhileshwari is there, Manish, Arya, Mahak is there, Surya, Vandana, how are you? Hey Tamanna, hi Nishit. Hey Darshilang, how are you? Aditya is there, Bharat, Nishit, Ankit again, Iram, Dimple. Good. Good to see you guys. Okay. Yeah, Punjabi Asif as well. Okay, Simran is there, Kavya is there. M. Gowda, Shiri, how are you? Hey, Manisha. Super good morning. Saturday, back on the weekend, studying BCK. I don't know how many of you have friends who got their results this week for foundation, a very positive result for majority of the people. And let me tell you, most of the people I had a word with who studied foundation from ICI live classes have scored really good, right? Even in BCK, majority of the people have scored more than 55, which is excellent. Hey Shreya, Pantini, how are you? Tina, Richa, Pranitha, Ananya is there, Ankita, Ritu, Mahima. Good morning, very good morning. कौन सा chapter पढ़ रहे हैं अभी? Who will tell us? We have completed how many chapters and which chapter are we on? This is the fifth class, I think, right? This is the fifth class, and we have covered a lot of chapters. जो बड़े बड़े थे, वो तो हो गए. Now we have 30 small chapters. Third is big, वैसे, but this is more like you'll have to learn a lot of stuff here. Not many concepts to talk about. Great. Thanks for saying that. Aditya. We are on chapter 3, not starting with. We have already started with chapter 3. Last time we touched upon the basic concepts. 2 completed, third is running. Great. Thanks, Manish, for calling that out. We completed chapter number 1, which was introduction, right? Which was introduction to BCK, which is business and commercial knowledge. We talked about what are the characteristics, what is sustainable business, right? We talked about 3 P's, profit, people, and what? Planet, right? Then we talked about general stuff around BCK. How is it relevant for chartered accountants? Why should you learn about it, right? Then different types of organizations we talked about. We talked about HUS, we talked about LLPs, we talked about what is limited liability, what are companies, what is a private company, what is a public company, right? And then we went into chapter number 2. Chapter number 2 was super interesting because we talked about business environment, right? We were talking about business environment, both internal and external, while our focus was on external environment, which had 2 parts, micro and macro, right? Micro environment is something which is very close to you, while macro environment is something which is beyond your control, and it is common for everyone in your industry, right? What is an industry? Industry is something, all the companies, all the businesses doing a similar stuff brought together are called industry, like a real estate industry or sports industry, right? Your Yonex, right, who makes rackets, or your Costco, all these companies are into sports businesses, right? And they can together be called sports industry, right? Like a FIFA, NBA, IPL, or whatever we have. All these are sports media enterprises, right? Same industry here, sports media industry here. So collation of all the businesses which are doing something same or almost similar brought together are called industry, right? Then we talked about external environment where micro and macro. Micro again, which is very specific to a particular business, like competitors, like suppliers, right? These are very close to you. You deal with them day in, day out, like intermediaries, right? You talk to them, consumers, customers. इन सब से आप daily बात करते हैं, इन सब से you have a direct connect, and they're different for every business, right? They are very, customers for you are very different from customers for another business, right? For a hair salon, आपका जो customer है is different from somebody going to buy a particular, let's say, some showpiece in a showroom, or a furniture or a sofa, right? Different customers. But है ये micro, you can control some prices, you can understand them, you can push them to pay more for your products. थोड़ा बहुत influence आप कर सकते हैं. That is micro external environment. Macro external environment is something which is beyond your control, and it is same for everyone. Like, for example, government,
राइट? आप गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकते. डेमोग्राफिक, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, सर्टेन एज ग्रुप, सर्टेन एज बैंड, राइट? एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इनकम स्टेटस है. यू कैन नॉट चेंज दैट. इट इज सेम फॉर एवरीवन. The same customer has the same demographic for every business in that area. If somebody is doing business in India, the population remains the same. If you sell a BMW, if you sell a Honda City, or if you go and sell a piece of headphones or a laptop or whatever you want to sell, the population remains the same. It's the same people to whom you have to sell. That is demographics, right? इसीलिए it is a macro. It is same for everyone. Like government को आप change नहीं कर सकते. If there is BJP, if there is a Modi Sarkar in the country, it is same for every business, right? It does not change कि भाई मेरे लिए कांग्रेस है, आपके लिए बीजेपी है. ऐसा नहीं होता है, right? It is macro environment, same for everyone, and you cannot control it. It is beyond your control as a business. That is why we call it macro external environment, right? Then we started talking about chapter number 3, which is business organizations. We talked about the kind of business organizations you can build. आप partnership कर सकते हो, LLP कर सकते हो, आप company बना सकते हो, right? आप HUF बना सकते हो. Then we talked about the environment. How do you understand and strategize your business? Now we are going to talk about certain big companies in India and foreign companies. How are they positioned? क्या काम करती हैं? Who are their owners? Who are their share? Who are the directors, who are the CFO, CEO कौन है, right? Why is this chapter important is because it helps you understand as a financial professional, you should know what a company does and how do you read about a company. The idea of this chapter is to make you learn how to read about a company, right? Because day in, day out, let me tell you, once you become a chartered accountant, people are going to ask you questions about companies and you should know some stuff, right? That's a general expectation from people. Okay, so this is where this chapter comes in. From exam perspective, right? From exam perspective, this is one of the most boring chapters. Okay, one of the most boring chapters because इसमें कोई concept ही नहीं है. This chapter does not have a concept. It's all about learning some names. It's about learning the names of the subsidiaries, learning the names of the companies, learning the name of CEO, CFO, subsidiary kya hai, right? What does it do? What are certain areas where they work, right? कुछ कुछ चीजें आपको हर कंपनी की याद रखनी पड़ेंगी, right? This is, I would say, a little boring, but in the long term, it is beneficial, right? हर चीज concept भी नहीं हो सकती. You need to empower your brain to remember stuff, right? That is where this kicks in. And we will do how we'll read this chapter is very simple. I'm not going to read the entire thing, बहुत boring होगा, right? If I start reading each and every line, very boring. What I'll do is, we'll go to a company. This is the study material, the latest one that I'll be presenting, okay? We will use this study material to study this chapter. I will give you an open book exam for every company, right? There will be something on the screen. We will talk about it. The interesting thing about that company, we will talk about it. And I will ask you questions from the book itself, okay? If you have your books, take out your books, right? आपके पास book है, निकाल लो, खोल के पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. We are learning, right? We are studying right now. It will be beneficial if you start underlining as well. I'll just give you a minute. Everyone who wants to get their book, who wants to open the book, that's fine. If you do not want to do that, that's also fine. Okay. You can make notes. You can underline stuff as we go through each company. And I will give you some exam questions. कि exam में ऐसे आ सकता है, exam में वैसे आ सकता है. The high probability questions I will discuss with you. And that is how we will do this chapter. Okay. Give me a thumbs up if this makes sense or you want me to do something else. I'm okay doing that as well. While people bring their books, if they are. Perfect. Already you have the book, Dimple. Super. Give me a thumbs up if this methodology makes sense for you. If you want me to do things some differently, कुछ अलग से करना चाहते हैं, we'll do that as well. Not an issue. वो भी कर लेंगे. Give me a thumbs up, give me an okay, whatever suits. Perfect. Perfect. Great. I see majority of you giving a thumbs up. Awesome. We'll just wait for 30 seconds for people who want to open their books or grab their books. अलमीरा से, किसी और रूम से, फेंक दी होगी कहीं पे तो लेके आना पड़ेगा, right? बुक ली भी है कि नहीं? That is a question. कई लोगों ने, स्मार्ट लोगों ने तो बुक ही नहीं ली होगी कि क्या पढ़ना है बुक से, एग्जाम तो ऐसे ही पास हो जाएगा.
Great. Okay. Perfect. Let's get started with chapter 3. First few topics, revision, and then we get to the company, right? We started in chapter 3, we started talking about what? I told you about certain companies, right? We talked about Indian companies, global companies. Indian companies के बारे में we talked about what? Nifty 50 के बारे में बात कर रहे थे. The top 50 companies from market value in the country which are on stock exchange, उनको हमने यहाँ पे दिखाया. Not all, major companies from them. We talked about public companies and public sector companies. इसमें से काफी सारी companies are public sector company, which means majority shareholding, more than 51% of the shares are held by the government of India. That is why they are public sector companies, but they are listed on the stock exchange as well. So they are a public company. So a public company can either be a like public company in terms of general लोग पैसा लगा रहे हैं, and it can also be a public sector company wherein the government holds majority share and other people are also investing in it, right? It can be both. But यहाँ पे a lot of companies you will see are owned by the government, and that is why they're called public sector companies. Okay. All these global companies that we will talk about, all of these are present in India as well. ये सब अपना धंधा इंडिया में भी करती हैं. That is why we have brought these companies here to understand from India context as well. Amazon India में भी है, American Express India में भी है, we have Apple in India as well, we have Goldman Sachs in India as well, right? And all these companies that you see, I will just give you a cheat code. Okay, if you want to go for industrial training, if you want to go for a job, if you want to go for internal audit, if you want to go for statutory audit, okay, ये तो लिस्ट आपके सामने ही है. You should just go and apply in these companies. इतनी अच्छी लिस्ट आपके सामने. You want to do industrial training, just open LinkedIn, right? Go to LinkedIn, follow people there, find out who is working in LinkedIn as a chartered accountant. Just mail them, just message them that, hey, I want to go for industrial training. Is there an opportunity? This is my resume. As simple as that. List आपके सामने है, right? You can use this as well. ये तो how creative you are with your stuff is depending on you. Great. Okay, let's go to the next one. We talked about budget analyst क्या करता है, financial analyst क्या करता है, what does a management analyst do, and market research analyst, right? Budget analyst talks about the kharchas, the expenses of the company. Financial analyst talks about investments, कहाँ पैसा invest किया जा सकता है, that is financial analyst. Management analyst sits with the decision makers like CEOs, CFOs, and then they help them in taking decisions कि आप ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, वैसा करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो ये गलत हो सकता है, right? All these discussions, all this decision making is where management analysts come into the picture. Number 4 was market research analyst. As the name suggests, market research analyst helps in market research की competitor क्या है, competitor का price क्या चल रहा है, right? What is the competitive price going on? हम कैसे beat कर सकते हैं? What is the strategy we can build to beat the competition, right? That is where market research analysts come into the picture. Okay. Then we talked about Nifty 50 के बारे में पढ़ा हमने, right? Benchmark index of the Indian Stock Exchange. Top 50 companies basis market value. What is market value? Very simple. Share price into number of shares is market value. Okay. Share price into the number of shares is market value. इस market value की top 50 companies on the list, which are listed in the Indian Stock Exchange, which is National Stock Exchange in Mumbai. वो क्या होता है, उसको बोलते हैं निफ्टी 50, द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, हाउ आर दे परफॉर्मिंग. ओके, उसको बोलते हैं निफ्टी 50. Then we talked about CFOs, CEOs, right? We talked about CFO, CEO, MD, director, CHRO क्या होता है, CTO क्या होता है. We discussed this in last class, right? Government companies में क्या होता है, managing directors are also sometimes the CEO. They are not different. And we also clearly mentioned that it really depends on the company, how they want to give a designation to people in their company. This is not a hard and fast designation that happens in businesses. This is something that the business decides. ये business के हाथ में है, वो कैसे अपना धंधा चलाना चाहता है. Okay, the business decides कि मेरे को CEO चाहिए भी या नहीं. There could be cases they say I don't need a CEO, right? मेरे पास chairman है, he or she will manage everything, right? That is how it works. It really depends on the business. Okay. Then we talked about unicorns, right? Startups में unicorns जिनकी valuation is more than $1 billion.
they are called unicorns. Okay, like Oyo, like Byju's, right? Like Zomato. Then Zomato ho gaya billion, beech mein ban gaya tha, right? Then we have Cred, we have Udan, right? All these are unicorns. Flipkart is a unicorn, right? We talked about all of this, and then we have come to our first company. Okay, I'll take a pause here for 1 minute. Any questions, any doubts? Let's listen to that, and then we will straightforward go into the companies, which is Indian companies, line by line, A to Z, right? Okay. डिलीवरी नहीं वैष्णवी आपकी प्लीज चेक करो, 1 महीना हो गया, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. Depends where you living, probably if the delivery is difficult in that area, but 1 महीना तो नहीं लगना चाहिए. Maybe just check that. We studied public sector and public companies as well. That is right, Mahima, we did that. The class would start on app as well, right? App में तो हो रहा होगा ये, या लैपटॉप में चला रहे हो, ऐप में नहीं चल रही है. No doubts? Great. We'll come to that. Simran, शुरू तो होने दो companies को. We'll come to that. What is portfolio of business? Slow and steady wins the race. Kavya, market value is the share price into number of shares is equal to the market value of the company, right? Which is market capitalization. मेरे पास 1 करोड़ शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, 10 करोड़ मेरी मार्केट वैल्यू है, right? If I have 1 crore shares and each share is of 3,000 rupees, I am a 3,000 crore market capitalization wali company, right? My market value as a company is 3,000 crores. Okay, that is how we value companies. Great. Yes, you can, Nikunj. Absolutely. My book is colorful, right? ये PDF है ना, ये colorful ही होता है. Perfect. Okay. There's another interesting question. If you fall down in exams, but I got higher in eco, it's like you have to aggregate होना चाहिए और सब में pass होना चाहिए, right? That is where the CA course is interesting because you have to clear every subject plus the aggregate. यही तो difficult है. ऐसे तो हर कोई अपना BCK eco में 100 ले आए, बाकी में fail हो जाए. लेवल से पास ऐसे नहीं होता है. Is market value important in this subject? No, तो it's just general knowledge. कुछ general knowledge के लिए भी दे रहा हूँ. एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो. ऐप में स्टार्ट नहीं हो रही वैष्णवी, मे बी सम प्रॉब्लम, बट ठीक है, आई एम हैप्पी यू आर ऑन द चैट एज वेल. आई अप्रिशिएट द एफर्ट यू आर पुटिंग टू वॉच ऑन YouTube and come on chat. Most CFOs in business are chartered accountants. Absolutely yes. 95% of CFOs are chartered accountants is what I know, at least in India. India में ही है CA तो. Government acquired more than 15% of the share, then companies called public sector. Yes. Group of Adani buys one of women IPL team for highest price. Okay, thanks Pramod for that information. Nikunj, we'll discuss that after we complete the syllabus about what is industrial training, how you do that. Okay. Abhi syllabus pe focus karenge. I'll solve all the questions. Don't worry. I'm here for another 6 more sessions. Great. Perfect. Let's go to the first one, which is Adani Enterprises, which is Adani Group, or what we talk about in this chapter is Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Okay, Adani Ports and Special Economic Zone Limited. कौन मुझे बताएगा इस कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? Very quickly. It's going to be the next 1.5 hours of questions. Okay, I'm going to ask so many questions today. You have to be very quick. Okay, ज़्यादा time नहीं लगाएंगे, इतना time है नहीं क्योंकि हमारे पास. I'll be asking a lot of questions. Quickly give the answers. We move on. Okay, who will tell me why do we have limited written इस company के पीछे? What does this mean? Limited क्यों लगाया है Adani Ports and Special Economic Zone Limited के पीछे? Because limited liability है कंपनी की. It's a public company, right? It's a public limited company. Public का पैसा लगा हुआ है, but still the liability is limited. Liability is limited कितने value तक? How much is liability limited? We studied ये theory ठीक है कि liability limited है. कितनी limited है? What is the limit?
हाउ डू यू डिफाइन दिस? लिमिटेड है, मुझे समझ आ गया. कितनी लिमिट है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ माई लाइबिलिटी? हाउ डू यू डिफाइन दैट? यू शुड नो दिस. ग्रेट. लाइबिलिटी इज लिमिटेड. लिमिटेड है. लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर पार्टनर्स. पार्टनर नहीं है, कंपनी है दोस्त. पार्टनर नहीं होते कंपनी में. डू नॉट कंफ्यूज कंपनी विद पार्टनर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज. कंपनी में पार्टनर नहीं होते. लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की है, शेयर होल्डर की नहीं है, कंपनी की. कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. What is the limit? Company's assets. Absolutely. Limited liability to the share value. No. शेयर वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे सर? हर दिन गिरता है शेयर प्राइस, वैल्यू नीचे ऊपर होती रहेगी आपकी. इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऊपर नीचे हर हर घंटे. शेयर प्राइस चेंजेस एवरी सिंगल सेकंड, तो लाइबिलिटी चेंज होती रहेगी क्या? नहीं. द करेक्ट आंसर आई हैव ऑलरेडी गॉट इज कंपनीज एसेट्स. राइट. द अमाउंट ऑफ एसेट्स यू हैव इन योर कंपनी, दैट इज योर मैक्सिमम limit. That is your the highest limit of the liability of the company is the amount of assets. ठीक है. मेरे पास फैक्ट्रीज है, मेरे पास लैंड है, मेरे पास कार्स है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है. आई हैव इन्वेस्टेड मनी एज ए कंपनी इन सर्टेन शेयर्स. लोगों को मैंने प्रॉपर्टी ली हुई है, मेरे पास फैक्ट्री है. ऑल ऑफ दिस इज माई एसेट. ये एसेट की मैक्सिमम वैल्यू इज माई लिमिटेशन टू लाइबिलिटी. इस सब को बेच के जितना पैसा मिलेगा उतना ही दूंगा आपको. उससे ज्यादा अपने घर से लाके नहीं दूंगा मैं. एज द चेयरमैन, एज द सीईओ, एज द सीएफओ, आई विल नॉट गो टू माई हाउस एंड ब्रिंग मनी फॉर यू. कंपनी में जितना है वो सब आपका है एज ए शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ बैंक, एज अ गवर्नमेंट. आपको लेने में से जितना लेना ले लो, बट एसेट की वैल्यू तक. उसके ऊपर आई डोंट हैव अ लाइबिलिटी. राइट. दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. ओके, लेट्स गो टू अदानी. अदानी का बारे में आपको क्या पढ़ना है? हाउ डू यू स्टडी अ पर्टिकुलर कंपनी इन दिस चैप्टर इज यू हैव टू रिमेंबर the ownership group. Okay, incorporation year you can ignore. Okay, let me tell you very honestly, आप पढ़ सकते हो. You have the time, you have the capacity, you have the capability to learn things. Super for you. Do this. अगर आपको लगता है यार मेरे से नहीं याद रखा जाता, यू कैन स्किप इनकॉर्पोरेशन ईयर. एक क्वेश्चन आएगा, छोड़ देना दोस्त. ठीक है, दिमाग मत लगाना उसमें. लेट्स गो टू ओनरशिप ग्रुप, विच इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू रिमेंबर अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड is owned by Adani Group. ठीक है, सिंपल है, याद भी नहीं रखना ये तो. ओके, हेडक्वार्टर्स, यस यू हैव टू रिमेंबर. Present chairman MD you have to remember. CEO you have to remember. CFO you have to remember. Right? You need to remember these things. Year आप ignore कर सकते हो. Okay? Let's go to understanding what the company does. Introduction क्या बताता है? A company's introduction will tell you about what does this company do. काम क्या है भाई इनका, पैसे कैसे कमाते हैं ये. राइट. APSEZ, which is Adani Ports and Special Economic Zone Limited, is the large network of ports in India. राइट. मुंबई में पोर्ट है, चेन्नई में पोर्ट है, केरला में पोर्ट है. राइट. कहाँ है? कोची में पोर्ट है, इधर आपका वेस्ट बंगाल में पोर्ट है. यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स, शिप्स कम एंड डिलीवर गुड्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम. somebody, let's say, I'll just give you an example. Somebody in living in Surat, okay, somebody is living in Surat, they ordered some product from South Africa. साउथ अफ्रीका से सूरत के एक मर्चेंट ने बोला आई नीड प्लाईवुड, मुझे प्लाईवुड चाहिए बेचने के लिए इंडिया में. साउथ अफ्रीका से बड़ी अच्छी लकड़ी मिलती है. उन्होंने लकड़ी, प्लाईवुड, दे ऑर्डर्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका. दैट शिप केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई. मुंबई पे पोर्ट बना हुआ है जहां पे सारे शिप्स अपनी पार्किंग करते हैं, सामान उतारते हैं, ट्रक्स में डलवाते हैं, फिर ट्रक मुंबई के पोर्ट से सूरत आता है. राइट. ये जो पोर्ट है, जो पार्किंग लॉट है शिप्स का, दिस इज व्हाट अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन डज. दे आर द पार्किंग लॉट, दे आर लॉजिस्टिक. सामान उतारना, इतनी बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हुई हैं उनकी. दिस इज व्हाट अदानी डज. ओके, कंपनी इंट्रोडक्शन टेल्स यू अबाउट व्हाट बिजनेस. राइट. Kirti, you cleared your CA foundation. Why you here? And big congratulations to you as well. You come here to thank me. That's great. That's a great motivation for all those who are studying. Right? Great. Okay. We're talking about Adani. These ports are actually helping in logistics, helping in delivery of goods, import and export of stuff. Right? इंडिया से भी सामान एक्सपोर्ट हो रहा होगा, वो भी इसी पोर्ट से होके जाता है. मैनेजमेंट ऑफ दिस पोर्ट, ownership of this port, right, is done by Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Okay, now this is what an introduction tells you.
बट व्हाट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? इसके नाम में है. पोर्ट मीन ट्रांसपोर्ट नहीं, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स अ लॉट, नॉट जस्ट ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ पोर्ट. ओके. लॉजिस्टिक्स क्या होता है? ये सिंपल. You guys do not know logistics is interesting to me because you are using logistics every day. Let me give you an example. Okay, logistics क्या होता है? ठीक है. नायका से सामान मंगवाया है, फ्लिपकार्ट से कभी सामान मंगवाया है, अमेजन से कभी सामान मंगवाया है. इफ यू ऑर्डर स्टफ फ्रॉम ई कॉमर्स कंपनीज, क्या होता है? यू आर ऑन योर फोन, यू क्लिक आई वांट लेट्स से दिस, मेरे को काजल चाहिए, मैंने काजल ऑर्डर किया. ओके, काजल ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस किया, फोन बंद करके बैठ गए. what is happening behind this? Your order goes to Flipkart ka warehouse. Okay, your order goes to Flipkart ka warehouse, the main warehouse. Usko bolte hai somebody living in, let's say, Navi Mumbai. ठीक है, somebody living in Navi Mumbai has ordered kajal. वो वेयर हाउस बोलता है ठीक है, द नियरेस्ट वेयर हाउस टू नवी मुंबई इज इन लेट्स से नवी मुंबई में है तो आपका थाने में एक वेयर हाउस है. थाने के वेयर हाउस से दे send a message through automatic system, their automated digital systems. The computer sends a message, boss, somebody has ordered in Navi Mumbai, uske ghar delivery karwao. And these are the details. This particular person, this address, यहाँ पे काजल डिलीवरी करवाओ. The थाने का warehouse gets this order. वो अपना warehouse में जाता है. The people working in warehouse get to know, okay, there is this काजल. वो अपना काजल रैक में से निकालता है, डब्बे में डालता है, पैक करता है, and puts it in a bigger box. That box goes to the final warehouse end point of थाने. वहां से एक मोटरसाइकिल वाला आता है. Right? Think about this. This is happening in 1 or 2 days when you just click on the order. Okay, that motorcycle person picks up your order, drives from Thane to Navi Mumbai. Navi Mumbai आपके घर आता है, घंटी बजाता है, आपको पैकेज देता है. This is logistics. This is logistics, right? Everything involved in this, the warehouse management, the inventory management, the delivery, the transportation, the order consolidation, all of this is logistics. Okay, now think about this. How many people are doing such transaction in a single day? Zomato, Swiggy, Flipkart, Amazon, Meesho, Nykaa, all the online things, everything online. इसको और बड़े लेवल पे ले जाओ. Indian people are importing stuff from the world. People, somebody living in USA is ordering something from India. ये सब भी हो रहा है. This is logistics, दोस्त. This is logistics. Okay, this is where these big businesses, जो बड़े धंधे होते हैं, वो छोटे काम से नहीं बनेंगे, वो बड़े काम से बनेंगे, right? This is such a huge work. That is why this is Ports Company, Adani Ports and Special Economic Zone Limited. This is what they do at a global level, at a country level. जो logistics हो रहा है वो अदानी करता है. Okay, now let's get to understanding what is SEZ, Special Economic Zone. क्या चीज है दोस्त? What is Special Economic Zone? The answer is on your screen, but simplify it for me. मुझे समझाओ कि Special Economic Zone क्या होता है दोस्त. Read what is there in the bubble given in the box and tell me what is SEZ, Special Economic Zone होता क्या है दोस्त. Simplify it for me. Read it and tell me होता क्या है Special Economic Zone. कंपनी के नाम में है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? We get help from the government. बस स्पेशल इकोनॉमिक जोन खत्म. You get help from government. If I get help from government, I am special economic zone. Government gave me a subsidy to study in Delhi University. क्या मैं special economic zone हूँ आदिति? Explain it in more exam oriented. इतना simple सरकार मदद करिए, special economic is not right. Government gives subsidies to business. You guys are reaching to the result, but why? Where the government gives some benefits to the business for the development of the area. Absolutely, Sarvesh. Sarvesh, you got it right. Others also would have understood. They might not have been able to put in words, but an area where the government wants to develop a particular area, usko wo special economic zone बोल देते हैं. Think about this. This is so smart, okay? And let me tell you, this idea came from China. China started this concept of special economic corridors, right? चाइना ने शुरू क्या किया, हमें गांव डेवलप करना है, हमें रूरल एरियाज डेवलप करने हैं, वहां पे फैक्ट्री लगा दो.
बट द कंपनी सेड कि यार मैं गांव में जाके फैक्ट्री क्यों लगाऊं, मुझे क्या फायदा मिलेगा, मैं क्यों गांव में जाके काम करूं. दे सेड ओके, आप गांव में जाके काम करो, यू गो टू द रूरल एरियाज एंड वर्क एंड वी विल गिव यू बेनिफिट्स. वी विल नॉट चार्ज टैक्स फ्रॉम यू, राइट. वी विल गिव यू वाटर एट हाफ द रेट. आपका बिजली का बिल हाफ कर देंगे. आपको 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है. आप जाओ वहां पे डेवलपमेंट करो. यू गो एंड डू योर बिजनेस इन अ रूरल एरिया. एंड दैट रूरल एरिया वेयर द गवर्नमेंट वांट्स टू लाइक पुश डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन. उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ओके, दिस इज व्हाट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मीन. Within special economic zone there is another thing which is called FTWZ, right, which is free trade and warehousing zone. Specific areas where the government wants to develop warehousing. जो सामान हम रखते हैं, I was telling you about थाने का warehouse और नवी मुंबई warehouse, जहां पे ये सब डेवलपमेंट चाहिए होती है, वहां पे they make the areas, they define the areas as FTWZ, which is your free trade and warehousing zone, right? Similarly, SEZ is where they want to push development. उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ओके, ग्रेट. इंडस्ट्रियल हमने पढ़ लिया, ये एग्जाम में आता है, याद रखना दोस्त. SEZ के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा. Okay, APSEZ operates in ports in Mundra, Dahej, Hazira, Dharma, Katputli terminals in Murmagaon, Visakhapatnam, Tuna Tekra. Very difficult names, but these can be asked. आपको नाम नहीं पूछेंगे. What they will do is, I will give you an exam question. Idea देता हूँ कैसे आता है exam में. This is what we are going to do in this chapter. Okay, आप पढ़ लोगे खुद. You have to read through anyway. The question can come as, right, Katupalli and Dhamra are the ports where which of the following companies operate? Question khatam. Question will be, Katupalli and Dhamra are the ports where which of these following companies operate? Adani Ports, Reliance Ports, Tata Ports, XYZ. आपको सोचना है किसने किया था, राइट. योर आंसर शुड बी अदानी पोर्ट्स. एज सिंपल एज दैट. इजी आएंगे क्वेश्चंस अगर आपको पता होगा. नहीं पता होगा तो तुक्के मार के आ जाना, राइट. मत ही मारना दोस्त. इफ यू डू नॉट नो द आंसर, जस्ट लीव द आंसर if you're not very confident. Okay, we understood what logistics is, right? Now business in the news, very important. Business in the news, the trick here is majority of the time question यहां से नहीं आएगा, but I have seen आ भी जाता है. Okay, but questions यहां से आ भी जाते हैं. Now APSEZ has been ranked as 1489th on the Forbes World's Largest Public Corporations of 2021 में. अभी इसको रैंक मिल गई दोस्त. ये एग्जाम में रैंक क्या याद करके जानी पड़ेगी. अगेन सेम एज इन कॉर्पोरेशन ईयर. बहुत ज्यादा चांसेस है कि नहीं पूछा जाएगा. But if you have capacity, capability and time to get that extra 1 or 2 marks, पढ़ लेना. याद रख सकते हो, याद रख लेना. If you want that extra 1 or 2 marks जिसकी वजह से पास एंड फेल हो सकते हैं, you should ideally at least go through. एकदम इग्नोर मत करना. कभी कभी you read something and that gets stuck, right? That gets stuck and that can come in the exam और आपको लगेगा वाह ये तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, मुझे मालूम है, even if you have not remembered it by heart. Okay, so my overall view to you is, please read everything which is there in the study material, but you do not have to spend a lot of time. परेशान नहीं होना कि मेरे से नंबर याद नहीं हो रहा है, रैंक का, इनकॉर्पोरेशन ईयर याद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, छोड़ देना दोस्त. ठीक है, but you should know the main content of the company. What does it do, where all does it operate. उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आगे पढ़ेंगे और भी, राइट. You have to remember all of this. These are where the questions come from. Okay, great question होगा. What is Forbes? Okay, आपने इंडिया टुडे नाम सुना है, हिंदुस्तान टाइम्स नाम सुना है, राइट. टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम सुना है. ऐसी देयर आर सर्टेन मैगजीन्स व्हिच कवर बिजनेस न्यूज. ठीक है, फोर्ब्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैगजीन्स अराउंड बिजनेस. वो हर साल रैंकिंग निकालती है कंपनीज की. इट गिव्स रैंक्स टू अ लॉट ऑफ कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब. उसके लिए दैट इज हाउ, दिस इज वेयर कंपनीज वैल्यू इट. उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है रैंक की दैट कंपनीज टेक प्राइड इन बीइंग ऑन द फोर्ब्स लिस्ट, राइट. ये है फोर्ब्स. फोर्ब्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस एंड कमर्शियल मैगजीन इन द वर्ल्ड. ओके, वो है फोर्ब्स. Okay, let's go to the next one, which is
एशियन क्यों बोल रहा हूँ? ओके, एशियन पेंट्स लिमिटेड, अगेन इट्स अ लिमिटेड कंपनी. बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी. इफ यू रीड दिस, this is a very interesting story around Asian Paints. Okay, now Asian Paints, you have to remember the headquarters Mumbai. You have to remember the names of the chairman and MD. यहाँ देखो, chairman and MD same है. कंपनी की मर्जी दोस्त, कंपनी की मर्जी. chairman and MD same रखा है उन्होंने, right? They can decide. It's the company's wish, and they've done that. CFO, you have to remember the name. Okay, now what are the kind of questions you can expect from Asian Paints? Start underlining if you want to. It operates in 16 countries, underline, right? It has 26 paint manufacturing facilities in the world, 65 countries, ignore kar do. But 16 countries mein operate karta hai, you should at least know that. Okay, now it has over 200 highly qualified scientists for technological development. It is India's leading and Asia's fourth largest paint company. Question for the exam. India's and Asia's fourth largest paint company is which is Asian Paints. Okay. Now, the nearest rivals, नाम याद रखना, एग्जाम में फिर से आता है. कांसाई नेरोलैक, शालीमार पेंट्स, जेंसन निकलसन, बर्जर पेंट्स आर कंपेटिटर्स टू whom. बहुत सिंपल है दोस्त, हमें तो पता ही होगा. एग्जाम में आपको बर्जर पेंट्स आए, आपको पता नहीं चलेगा पेंट की बात हो रही है तो एशियन पेंट्स ही होगा, और ऊपर से एमसीक्यू है. सुपर सिंपल चैप्टर है तो उसको याद भी नहीं रखना होता है इसमें तो, राइट? बट स्टिल there are certain trick questions that come. Okay, options बड़े confusing आ जाएंगे आपको, then you will get stuck. So you should read this very carefully. Okay, now let's talk about portfolio of the company. It makes interior wall. अब ये भी interesting है. Which of the following, right? Which of the following segments is Asian Paints not active in? Trick question, घुमा दिया. Question घुमा दिया, right? Question क्यों घुमा दिया? They are asking which of the following they are not doing, which kind of business they are not doing. यहाँ तो चार आपको दिए हैं. They do internal wall finishes, they do exterior wall का पेंट बनाते हैं, घर के अंदर की दीवार, घर की बाहर की दीवार का पेंट बनाते हैं, एनामल्स बनाते हैं, लकड़ी की पॉलिश बनाते हैं, और जो लोहे पे पेंट होता है वो बनाते हैं, राइट? चार चीजें बनाते हैं, वी नो दैट. बट which of the following are they not part of? What if I add here? What if I add a certain other option and confuse you? That is an exam question. Okay, so you should know which four they are part of so that you can identify which of the one they are not part of. Okay, right. In exam ranking will be asked for 2021 ranking 2021. Your study material is your Bible. Okay, your most relevant study material for the examination से ही question आएगा. आपको current affairs नहीं पूछने वाले हैं. This is not a UPSC. Okay, you will be simple दोस्त, very simple. I'm repeating this. कुछ भी नहीं है, आधे पेज, 4 लाइनें हैं दोस्त, इतना तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, right? Foundation है. The next one is Axis Bank Limited. अभी देखो बैंक भी लिमिटेड है दोस्त. Interesting thing about banks is the banks are also limited. I don't know if you know this. The maximum liability that a bank has for your fixed deposit. आपने मान लो 10 लाख रुपए का FD करवाया, आपने fixed deposit कराया 10 लाख रुपए का. The bank, in case of any bankruptcy, in case of any problem, in case of बैंक बंद हो रहा है, घाटा हो गया उसका बहुत ज्यादा, bank is only liable to pay 5 lakh rupees to you maximum. आपकी 1 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है कंपनी में, राइट? आपके पेरेंट्स ने, आपके सारे फोरफादर सब ने मिलके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके बैंक में डाल दिया, उसकी फिक्स डिपॉजिट करा दी, बैंक बंद हो रहा है, बैंक कहेगा ये लो आपके 5 लाख रुपए, आई एम लाइबल टू दैट ओनली. दैट इज एज पर लॉ, राइट? इतना इंटरेस्टिंग है, इतने कुछ पैसा सेफ ही नहीं है. ओके, बट हियर द पॉइंट इज एक्सिस बैंक लिमिटेड. ओके, Axis Bank is a company incorporated under the Companies Act. It is a banking company. Okay, it is limited, liability limited. Axis Bank की. Okay, headquarters Mumbai. MD CEO इसका सेम है, उसका चेयरमैन MD सेम था एशियन पेंट्स का, इनका CEO और MD सेम है. ओके, CFO पुनीत शर्मा जी, नाम याद रखना प्लीज. ओके, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एक्सिस बैंक में क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये देखो क्या है. थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया कौन सा है दोस्त? Another one. Okay, we have Bhumika also. She has also cleared her foundation. Bhumika, big congratulations, and I think this is going to be great motivation for all of us who are studying today, right?
Thank you for joining those classes and coming here and telling about your success. Best of luck. Axis Bank, we're talking about Axis Bank, which is the third largest private sector bank in India. Okay, it is the third largest private sector bank, dost. It is not owned by the government. It is owned by some private people. Okay, Sarkari bank nahi hai. It's a private sector bank in India. It is the third largest private sector bank. Okay. Now, another thing is Axis Bank is one of the first new generation private sector banks to have begun operations in 1994. Right? The bank was promoted jointly by SUUTI, then known as Unit Trust of India, LIC, General Insurance Corporation, and National Insurance Corporation. राइट इन सब ने यहां तक जो आ रहा है इन सब ने मिलके एक बैंक शुरू किया ऑल दीज गवर्नमेंट ये सरकारी कंपनियां हैं सरकारी कंपनीज ने मिलके एक बैंक शुरू किया एक्सिस बैंक जिसको बाद में उन्होंने पब्लिक को बेच दिया and it became a private bank. Okay, it started with an ownership of government companies. Then the government slowly, steadily sold off the shares to general public, और वो private sector bank बन गया. This is Axis Bank, right? आपको पता नहीं होगा ये. अभी आज आपको पता चल गया. This is why these chapter, this thing in syllabus is important because as a financial expert, ये सब तो is general knowledge that you should know, right? People will expect you to know some stuff, some interesting stuff about things that are happening in financial world. Okay. Now, the overseas operations of bank are spread over 10 international offices, Dhaka, Dubai, Abu Dhabi. ऐसे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. Don't get confused. क्या मुझे याद रखना पड़ेगा कौन सी कंट्रीज में एक्सिस बैंक की ब्रांच है? नहीं. We won't ask that. इतना क्रूअल नहीं होने वाला कोई. Okay. बट विजन एंड कोर वैल्यूज 100% आएंगी. मैं तो भाई आपको कह रहा हूँ इसको हाईलाइटर 5 बार हाईलाइट कर दो. राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेर एवर किसी भी कंपनी में वी गोइंग टू गो अबाउट ऑल द कंपनीज किसी भी कंपनी में आपको अगर विजन और कोर वैल्यूज दिख जाए विजन दिख जाए मिशन दिख जाए फिलॉसफी जो फिलॉसफी की हेडिंग है if you figure out if you find there is a philosophy heading in any of the companies just focus and remember that the questions are going to come from that for sure 100,000% क्वेश्चन वहां से आएगा. ठीक है. द विजन ऑफ एक्सिस बैंक क्या आएगा विजन स्टेटमेंट डाल देंगे. द क्वेश्चन विल बी टू बी प्रेफर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर एक्सेलिंग इन कस्टमर डिलीवरी थ्रू इनसाइट एम्पावर्ड एम्प्लॉयज एंड स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज द विजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज. आपको ऑप्शन आएगा HDFC, एक्सिस, ICICI, देना बैंक. ढूंढो. अगर आपने नहीं पढ़ा होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे यार HDFC का या एक्सिस का है हमें पता ही कैसे होगा इसमें तो तुक्का भी नहीं मार सकते आप. राइट दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज सुपर इंपॉर्टेंट. ओके परफेक्ट. सेम गोज विद कोर वैल्यूज. सेम गोज विद कोर वैल्यूज. कोर वैल्यूज मीन्स जो प्रिंसिपल्स आपके लाइक व्हाट डू वी से आपके क्या प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं व्हाट आर योर कोर वैल्यूज. राइट वो क्या होता है व्हाट डू वी से मम्मी पापा ने कुछ सिखाया नहीं व्हाटएवर इट इज. राइट those are your core values what you believe in how you function. आपके principles क्या हैं सिद्धांत. राइट आपके जीवन में सिद्धांत क्या है what are your principles. that is customer centricity, ethics जो करेंगे सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे. राइट दैट इज एथिक्स. ट्रांसपेरेंसी वी विल टेल एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे. एंड टीम वर्क एंड ओनरशिप. राइट these are something that girls want from boys but सेम थिंग बैंक इज ऑल्सो टेलिंग इट्स कस्टमर की ये सब हमको दो एथिक्स दो ट्रांसपेरेंसी दो टीम वर्क दो ओनरशिप दो राइट कस्टमर सेंट्रिसिटी दो. सेम बैंक भी आपको वही कह रहा है ये सब हम आपको देंगे. दीज आर आर कोर वैल्यूज ऑन विच वी फंक्शन. ओके पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके तमीज नहीं होती है एरम योर प्रिंसिपल्स आर नॉट योर तमीज सिद्धांत इज द राइट वर्ड. राइट तमीज इज डिफरेंट. Okay, let's talk about portfolio of the company. There was a question as well. What is portfolio of the company? चलो एक और example देते हैं simple example देते हैं फिर इस पे आते हैं. The example of understanding portfolio is ठीक है classic example देता हूं आपको. That is let's say पतंजलि का ले लो.
टूथपेस्ट बनाती है, मैगी बनाती है, बिस्किट बनाती है, तेल बनाती है, दवाइयां बनाती है. It is producing hair oil, coconut oil, vegetable oil, then biscuits, then atta. There's chawal from Patanjali. There is cosmetics. Then there is ghee. Then there is milk product. There is everything, right? They're selling everything. That is the portfolio of the company. What are the products and services it offers to the customers, right? Let's talk about Jio. Let's talk about Airtel. इंटरनेट देता है, फोन देता है, सिम कार्ड देता है, फोन भी, और क्या करता है आपको, फाइबर नेट देता है, टीवी देता है, राइट? देयर इज एयरटेल डीटीएच, देयर इज एयरटेल ब्रॉडबैंड, देन देयर इज एयरटेल सिम कार्ड, इंटरनेट देता है, फोन देता है, सब कुछ. दीज आर पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी. वो पोर्टफोलियो ऑफ एयरटेल है, ये पोर्टफोलियो ऑफ पतंजलि है. What are the products and services that it offers to the customers is called the portfolio of the company. ठीक? Now, what is the portfolio of अपना Axis Bank? Axis Bank retail banking करता है for you and me. हम जैसे गरीब लोगों के लिए retail banking, छोटे लोग, right? छोटे लोग in terms of we do not have high transactions. 200 करोड़ की transaction नहीं कर रहे हैं, right? Don't take in other sense. I'm just explaining it. We are not doing high value transactions. We are not big corporations. We are not big companies. We are not big sarkars, right? What we do is we are small retail people, right? 100 rupees का पेटीएम कर दिया, 50 रुपए पेटीएम स्कैन, 200 रुपए, 2000 रुपए के जूते मंगवा लिए. Small transactions is what we do, right? This is retail banking. कार्ड स्वाइप कर दिया, शॉपिंग करने के क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, डोमिनोज जाके कार्ड स्वाइप कर दिया, मैकडोनल्ड से ऑर्डर कर लिया, राइट? दिस इज रिटेल बैंकिंग. We are using smaller transactions. We are using banking services for daily use. That is retail banking. Second is corporate banking. Corporate banking, right? Corporate banking is like big companies use corporate banking. सबसे simple example है, every company हर month salary देनी होती है, right? Let's say I have a business and I have 5,000 employees. Okay, I have 5,000 employees. मेरे को every 31st of the month I have to pay salaries to all the 5,000 people. Correct? I have to, right? सुबह 6 बजे सबके अकाउंट में पैसे चले जाने चाहिए उनकी सैलरी के हिसाब से, right? Whatever the salary is for the month, after deducting TDS, after deducting everything, आपको वो सैलरी दे देंगे. ये सर्विस प्रोवाइड कराना इज कॉर्पोरेट बैंकिंग. जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. दिस इज कॉर्पोरेट बैंकिंग कि भाई 5,000 पीपल, इवन इफ एवरेज सैलरी इज 30,000 रुपीज, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो 15 करोड़ रुपए आपको एक झटके में 5,000 लोगों के बैंक में भेजने. These kind of services are called corporate banking, right? These kind of services are called corporate banking. Now, another corporate banking के अंदर क्या आता है? Let's say I'm again a business and I have 60 crore rupees idle. मेरे पास 60 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, कैश इन टर्म्स ऑफ बैंक में पड़ा है. लेट्स से मेरे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में 60 करोड़ रुपीस पड़ा है. तो बैंक मेरे को फोन करेगा, कहेगा सर ये बैंक में क्यों रखा है आपने? मैं आपके इन्वेस्ट करा देता हूँ मार्केट में, आपकी एफडी बना देता हूँ, और लेट मी जस्ट बाय सम बॉन्ड्स फॉर यू, राइट? आपके, या फिर मैं अफ्रीका की मार्केट में लगा देता हूँ, राइट? पैसे. Can I help you invest this money somewhere in the world? I'll say, okay, do that for me. Corporate banking. Corporates become your customers. Big transactions, right? That is corporate banking. Number 3, international banking. You go to US, you go to Australia, you go to wherever you want to in the world, and you get services from these banks. Axis Bank, हर country में, almost. राइट? उन्होंने ब्रांचेस खोल दिए हैं, उन्होंने वहां पे अपनी सर्विसेज दे दी. ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू चार्ज मनी फ्रॉम यू. आप इंडिया में अगर 5,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन करते हो, वो 5 रुपए लेते हैं आपसे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. You go to Switzerland and you spend what, like 100 francs, which is like 10,000 rupees. वो आपसे ले लेगा 2 फ्रैंक. आपको यार ये तो बहुत ज्यादा चार्ज ले रहे हो आप, लाइक दो मेरे कितने, आप 200 रुपए काट रहे हो. यहाँ पे इंडिया में तो आप 5 रुपए काटते थे, यहाँ पे आप 200 रुपए काट रहे हो. This is because we are giving you an international banking service. You don't have to go and open a separate bank. कोई document submit नहीं कराने, उनकी law से we have done all the work for you, right? We have already done all the work for you. We are charging for it. That is international banking. International transactions, as the word suggests. ठीक? Okay. Again, business in the news. If you can remember, remember. If you cannot, do not take too much stress. इसके पीछे रोने मत लग जाने, मेरे से याद नहीं हो रहा है. Okay?
Okay, let's go to the next one, which is Bajaj. But before I go to Bajaj, is the speed right or should I increase the speed? Because we have a lot of companies to cover. Let me know if I should maintain this speed or you want me to go faster. Quickly tell me because I want to go a little faster. अभी ठीक है because we are doing first few companies, so you get to know how to study it. इसके बाद फटाफट से कर सकते हैं. But let me know if you want the same speed or I can go faster. फटाफट से बता दो मुझे. Please increase, maintain, increase, maintain. Faster is okay. Increase, maintain. Faster के vote अभी तक ज्यादा है. I'll just wait for another 10 seconds. It's like 60-40. Faster के 70 हो रहे हैं. Cool. Let's go थोड़ा सा faster because anyway you have to study this chapter yourself also for sure more than what I do. सारी पढ़ने हैं but ये वाला थोड़ा ज्यादा पढ़ना है. Okay, let's increase the speed. Let's go to Bajaj. You know the names याद करने पड़ेंगे. I'm not repeating that. Company introduction again, founded by Jamnalal Bajaj in Rajasthan. Underline Rajasthan में कौन सी company start हुई थी by Jamnalal Bajaj. Bajaj आ जाएगा नाम, आप कर लेना. Or you can say which automotive company was founded in 1940s in Rajasthan. You should know Bajaj. ठीक है, underline कर लीजिए उसके. Okay, now Bajaj is the Indian two-wheeler, three-wheeler car manufacturing company. Okay, three-wheeler auto Bajaj बनाता है. You will see a lot of autos. Auto rickshaw होता है, three-wheeler, tuk-tuk जो होता है आपका, right? That is what Bajaj Auto Limited, Bajaj Auto Limited again produces, right? It is the world's largest three-wheeler manufacturer. दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो बनाने वाली कंपनी है ये, राइट. अंडरलाइन रिमेंबर. ओके, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो थ्री व्हीलर बनाने वाली कंपनी है. फिलॉसफी भैया पूरा कलर कर दो, पेंट कर दो, फाड़ के चिपका दो. फिलॉसफी से क्वेश्चंस आएंगे. द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस आर फ्रॉम फिलॉसफी ऑफ एनी कंपनी. ओके, विजन क्या है, मिशन क्या है. दे विल गिव यू द मिशन एंड विजन. You have to figure out which company's vision it is, right? To attain the world-class excellency of demonstrating value-added products to customers. Boss, this is Bajaj का vision. याद होना चाहिए. एग्जाम में तुक्का नहीं लगेगा. Okay. Now, segments and products. Again, this is portfolio of products. We're talking about segments and products, which means motorcycle है, Avenger, Dominar, Discover. ये तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा. Even if it comes in the exams, let's say which company produces Dominar. You should know it's Bajaj. It's a motorcycle name produced by Bajaj. थोड़ा सा याद रखना ये. Questions आते हैं because the examiner feels that people of your age should or would know this, right? एक expectation होती है that you would know the names of the bikes or some cars and everything, right? So questions might come from here as well. Keep it as low importance, but you have to read this very carefully. Okay, again business and news. रोना नहीं है इसके लिए, याद होता है, please कर लेना. Okay, let's go to the next one, which is Bharti Airtel Limited. Airtel Limited, Bharti Airtel Limited, New Delhi headquarters. Name, chairperson, MD, CEO, again the same, CFO Badal Bagri. Okay, now Bagri hota hai, Bagri hota hai, whatever it is. Okay, now Bharti is the leading global telecommunication company. It is the leading telecommunications company. What कौन सी industry में है? Question in the exam comes. Bharti Airtel Limited is a part of which industry? The answer is telecommunications. Telecommunication industry की company है आपकी भारती एयरटेल. अंडरलाइन कर लीजिए, ऊपर एरो बना के लिख लो इंडस्ट्री. द इंडस्ट्री इज टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री व्हिच ऑपरेट्स इन 20 कंट्रीज अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका, राइट. जस्ट गिविंग यू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसमें नहीं होगा बट अफ्रीका में वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम सिम कार्ड कंपनी इज एयरटेल. पूरा अफ्रीका में सबसे बड़ी कंपनी है एयरटेल, अगर आपको पता हो तो. ओके, नाउ यहाँ पे मुझे फिलोसफी दिख रहा है दोस्त. क्या करना है आपको पता ही है. फिलोसफी जहां पे दिखेगा पेंट कर दो इसको. ओके, I'm just mark whatever you're doing. Then portfolio of the company. We were talking about Airtel just right now. SIM cards, internet, broadband, D2H. Then companies को भी तो देता ही है, right? If you go to an MNC, if you start working in a big company, big startup, they have so many landlines, they have so many, सबको अपने corporate SIM cards मिलते हैं. Everybody gets a corporate SIM card, right? This is what Airtel also provides. कंपनी कॉर्पोरेट लेवल पे भी वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो वो इंडिविजुअल्स को करा रहे हैं, राइट. दे प्रोवाइड द सेम थिंग टू कॉर्पोरेट्स एज वेल. दिस इज कॉर्पोरेट टेलीकम्युनिकेशंस इज आल्सो व्हाट दे डू. पोर्टफोलियो याद रखना,
याद रखना, comes in exams. Okay, portfolio philosophy, ये तो भाई आपको सबके आने चाहिए. Okay, business in the news पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, याद रख सकते हो, प्लीज रख लेना. Okay, perfect. Let's go to the next one, which is Bharat Petroleum Corporation Limited. Great. Interesting thing about this, okay? ओनरशिप देखो क्या है, ओनरशिप किसकी है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओनरशिप इज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, विच मींस दिस इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर है. बट क्या इसके शेयर्स मार्केट में है? हाँ जी हैं. इट इज ए लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड आ रहा है ना यहाँ पे, इट्स ए लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी. इट इज ए लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इंफॉर्मेशन बबल दिया हुआ है बुक में, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. Do you know that huge companies owned by the government are tagged as Navratnas, Maharatnas, and Mini Ratnas? Okay, based on their revenue and size of operations. Based on their revenue and size of operations. As of October 2021, there are 10 Maharatnas and 14 Navratna companies in India. सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज की टॉप कंपनीज, द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनीज को नवरत्नास, महारत्नास और मिनी रत्ना में बाइफरकेट किया जाता है बेस्ड ऑन द रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस. कितनी वो बड़ी है, कितनी वो फैली हुई कंपनी है. एज ऑन अक्टूबर 2021, 10 Maharatnas and 14 Navratna companies have been like identified and classified by the government. Okay, now we are talking about Bharat Petroleum Corporation Limited, which is a Maharatna company. Which is a Maharatna company. Maharatna है, भारत सरकार की महारत्न है वो, right? All government companies that we shall discuss in this chapter are either Maharatna or Navratna. Okay, या तो वो नवरत्न है या वो महारत्न है. Okay, great. निफ्टी 50 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो रिपीट हो रहा है. हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दोस्त, चेयरमैन याद रखना, एमडी सीईओ आर द सेम, सीएफओ का नाम याद रखना प्लीज. इंटरेस्टिंगली, इफ यू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, एग्जाम क्वेश्चन मेरे सामने ही आ गया. इतना इंटरेस्टिंग एग्जाम क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट कंपनीज, which of the following public sector companies initially started as a private company under the name of Burma Shell Refineries Limited? The answer is Bharat Petroleum Limited. Bharat Petroleum Limited is a public sector company, but it was started, it began its business as a private company. It's a private limited company 1952 में. फिर सरकार ने उसको खरीद लिया. सरकार ने उसके 51% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए. राइट, द कंपनी बिगैन इट्स वर्क इन बॉम्बे रिफाइनरी. इतना ये सब आप पढ़ना, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. लेट मी बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट, questions can come, especially the government companies. The examiners in ICAI love government companies. गवर्नमेंट कंपनी से तो उनको अलग ही प्यार है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं. प्राइवेट कंपनी से इतने नहीं आएंगे जितने गवर्नमेंट कंपनी से आएंगे. ठीक है, लेट मी बी ऑनेस्ट एंड कैंडिड बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन इन एग्जामिनेशंस. सो गवर्नमेंट कंपनीज को थोड़ा और सावधानी से पढ़ना है. ओके, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी. कंटेंट आल्सो, सरकारी कंपनी के कंटेंट इतना बड़ा बड़ा होगा, बहुत सारा होगा, प्राइवेट में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है. राइट, because they love government companies. Okay, so be very careful about government companies. Okay, Bharat Petroleum is an Indian state controlled oil and gas company. कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है दोस्त भारत पेट्रोलियम? ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री. इंडस्ट्री कौन सी है? ऑयल एंड गैस. ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री. ओके, the corporation operates 2 large refineries located in Mumbai and Kochi. Again an exam question, dost. Every line is a question here. Which corporation, which public sector company operates 2 large refineries in Mumbai and Kochi? Bharat Petroleum. Bharat Petroleum Corporation Limited.
क्वेश्चन घुमा दूं एक बारी फिर से. अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. इफ आई एम द एग्जामिनर, मैं तो आपको एग्जाम आउट ऑफ बना दूंगा. राइट? हाउ? Public sector company which operates in Mumbai and Kochi, can you identify the CFO? अभी क्या हुआ? डबल आपको सोचना पड़ेगा. Who is the CFO of the public sector company which operates in two large refineries in Mumbai and Kochi? पहले तो योर दिमाग विल हैव टू आइडेंटिफाई दोस्त कंपनी कौन सी है, विच इज भारत पेट्रोलियम. फिर 4 ऑप्शन आएंगे, उसका सीएफओ कौन है. राइट? डबल लेयर्ड क्वेश्चंस कैन आल्सो कम. ओके, सो वेरी केयरफुली. मैं एग्जामिनर हूं, मैं तो ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा दोस्त. राइट? आई मेक इट टफ. Why? Because you're studying, you're spending so much time, right? So you should be smart enough to answer those questions. So there can be double layered questions as well. So you have to be very careful, right? You want to note this down somewhere, book में रख लो, क्योंकि उस time revision के time याद रखना. There can be double layered questions as well. For example, which public sector company which has two large refineries in Mumbai and Kochi, right, has the CFO of the name of what is the name of the CFO of the public sector company which has two large refineries in Mumbai and Kochi? 2 बार आपके दिमाग को दौड़ना पड़ेगा. ओके, पहले टू आइडेंटिफाई भारत पेट्रोलियम, देन इट्स सीएफओ. ओके, लेट्स गो थोड़ा सा नीचे. फिलॉसफी दिख गया दोस्त, पेंट कर दो. पोर्टफोलियो दिख गया दोस्त, पेंट कर दो. राइट? The philosophy and mission, the mission and vision you should know of every company. याद रखना पड़ेगा. You and me have no option. I'm really sorry, we don't have an option. We have to remember this. Portfolio of the business, which is products and services. क्या बेचता है दोस्ते, क्या बेचता है. Right? Now, और कहाँ है portfolio में? In government companies, what it's saying is the company business is divided into 7 SBUs. 7 different kinds of business units. Retail, lubricants, aviation, aeroplane को भी तो तेल चाहिए दोस्त. Refinery, gas, INC and LPG. Right? They have popular loyalty program like Petrocard and Smart Fleet. Exam question 1000. Which of these companies has a loyalty program by the name of Smart Fleet? I'm pretty sure किसी को आंसर नहीं आएगा एग्जाम में अगर पढ़ा नहीं होगा तो. राइट? Which of the companies has a loyalty program under the name of Smart Fleet? The answer is Bharat Petroleum दोस्त. जिंदगी लग जाएगी, तुक्का नहीं मार पाओगे अगर पढ़ा नहीं हुआ तो. राइट? यू विल थिंक यार सरकार तो इतना स्मार्ट नाम नहीं रख सकती, स्मार्ट फ्लीट, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. बट है. राइट? ओके, double eight questions, Mahima, you're ready for it? Awesome. You should be ready, right? You should be ready, because abhi I'll also give you more examples as we go through more companies. Okay. Portfolio, we talked about this. Then Mumbai refinery, Kochi refinery, they have a refinery in Bina, they have a Numaligarh refinery. Right? Remember the names. याद रखने पड़ेंगे क्या नाम? हाँ जी. Yes, you will have to remember the name. Right? You will have to remember the name. That is why I'm saying chapter 3 आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा. Plan accordingly. Another one question came was, then how do I prepare for the examination? दोस्त, solve as many questions as you can. बुक के पीछे पता है कितने सारे questions हैं? इतने सारे questions हैं, solve करते करते थक जाओगे आप. इतने सारे questions हैं. Right? यहाँ पे देखो 48 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 50 क्वेश्चंस हैं. प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस हैं. There are practice questions uploaded on the website. I will do MCQs, right? We will do MCQs. होगा, मजा आएगा. You will understand all of that. Okay. Let's go to the next one, which is Cipla. Cipla Limited. Cipla Limited करती क्या है? कौन बताएगा मुझे? Open book question for you. What does Cipla Limited do? किस चीज की कंपनी है? What is the industry of Cipla Limited? What does Cipla do? Which industry is Cipla in? Mahima, great question. What is the difference between vision, mission and aim? Okay, strategic management में हम पढ़ते हैं डीप में, बट मैं आपको बड़ी फटाफट से समझाता हूँ. विजन, मिशन एंड एम में फर्क क्या है? विजन इज व्हाट यू वांट टू बी. मिशन इज हाउ यू वांट टू अचीव दैट. ओके, एंड एम इज शॉर्ट टर्म. उसको अचीव करने के लिए आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा. Your vision is
to be a chartered accountant. Your mission is to complete your studies within time so that you crack the examinations. That is your mission. Your vision is broad. बहुत बड़ा सपना है आपका. That is your vision. You want to be a chartered accountant. Your mission, कैसे बनोगे chartered accountant? By clearing the examination. उसके लिए you will have to have discipline of study. That is your mission, to have discipline in your study timetable. What is your aim? Your aim is to finish BCK in next 1 month. That is your aim. ऐसे define होता है. Vision, mission and aim. Okay. Same companies के लिए होता है. Okay. The answers are there. Medical industry, healthcare industry, medicines, supplies for pharmacy. What is CIPLA? Great question. What is CIPLA? CIPLA is on the screen. Okay. Chemical industry. Bulb बनाती है CIPLA. ये कौन सा CIPLA का bulb use कर रहे हो दोस्त? Okay. Medicine. चॉकलेट. सिप्ला की चॉकलेट खाई है. ये कौन सा सिप्ला है दोस्त? कौन सी चॉकलेट खा रहे हो आप? ओके. इट्स अ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. फार्मा कंपनी है दोस्त. दवाइयां बनाती है ये. कौन चॉकलेट बल्ब कहाँ से आ रहे हैं? होते भी होंगे तो आई डोंट नो. हो गया होगा. दे वुड हैव bifurcated their business, but major business is pharma. Medicines बनाते हैं. Okay. Cipla was founded as the Chemical, Industrial and Pharmaceutical Laboratories. फुल फॉर्म था सिप्ला का. ये अभी नहीं है. अभी इसका नाम सिप्ला ही हो गया है. कोई फुल फॉर्म नहीं है आज की डेट में. बट व्हेन इट स्टार्टेड इट हैड अ फुल फॉर्म व्हिच वाज केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज. CIPLA. Right? It was started by Khwaja Abdul Hamid, right, in 1935. अंग्रेजों के टाइम कंपनी खोल दी भाई साहब. Okay. YK Hamid right now is the chairman. MD CEO Umang Vora and Kedar Upadhyay is the CFO. Cipla. Okay. The company क्या किस चीज की दवाइयां बनाती है? It offers prescribed drugs, that is medicines for all these arthritis, cancer, depression, all other well-known over-the-counter drugs for cold, oral hygiene, agrochemicals, right? ये सब skin care, इन सब की दवाइयां, tubes, ointment जो आते हैं, ये सब सिप्ला बनाती है दोस्त. Okay. It also builds drugs for agro, गाय के लिए, बैल के लिए, sheep के लिए, animals के लिए मेडिसिन भी सिप्ला बनाती है. राइट. ओके. फिलॉसफी दिख गया दोस्त मुझे फिर से. सिप्ला का मरहम लगाया ना, ये वही है सिप्ला. ये वही सिप्ला है. फिलॉसफी दिख गया. क्या करना है फिलॉसफी दिखते ही? पेंट कर दो दोस्त. पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी दिख गया. फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा. हाँ जी, फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा. राइट. पोर्टफोलियो इज वेरी सिंपल वैसे. राइट. पोर्टफोलियो क्या है? ये रहा आपका पोर्टफोलियो. इसका सबसे सिंपल है. 200 generic and complex active pharmaceutical ingredients. 200 plus generic medicines बनाती है सिप्ला. 200 plus generic medicines are produced by Cipla. Business news, if you can remember, super good. If you cannot, no problem. But just to mention, वर्ल्ड की 460th सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर सिप्ला है. Cipla is 460th world's best employer. Okay, cool. Next one is Coal India Limited. Coal India Limited owned by whom? फटाफट से मुझे बताइए. Coal India Limited is owned by which group? कौन ओन करता है कोल इंडिया लिमिटेड को? फटाफट से बताएंगे फिर आगे चलेंगे. गवर्नमेंट. सुपर. गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी. इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. ग्रेट. majority of you, क्या everyone has written government of India. It's a public sector company again. The CMD and chairman Mr. Pramod Agarwal, he is IAS officer. UPSC क्लियर करो, IAS बनो एंड आप उसमें प्रोग्रेस करो. आफ्टर 15, 16, 17, 18, 19, 20, whatever your luck is, after so many years in service, you are promoted as the CEO and MD of some of the biggest corporations of India. Right? आप कोल इंडिया लिमिटेड के MD CEO बन सकते हो. आप भारत पेट्रोलियम के बन सकते हो. बड़ी बड़ी ये जो सरकारी कंपनियां हैं इनके
आप सीईओ एमडी बन सकते हो बाय बिकमिंग एन आईएएस, आपके सामने दिख रहा है। ओके ग्रेट। इंडस्ट्री क्या है मेरे को बताएगा कोई? कोल इंडिया लिमिटेड की इंडस्ट्री क्या है? फटाफट से ये भी आंसर करेंगे, विल नॉट स्पेंड मच टाइम। कोल इंडिया लिमिटेड की इंडस्ट्री कौन सी है? माइनिंग, दैट इज राइट हिरम, दैट इज द राइट आंसर। Mining industry. Coal India Limited is in coal mining industry. It's a coal mining company. Industry, circle karo, industry likh do. Okay, it is the largest coal producer company in the world. दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। दुनिया की, इंडिया की नहीं, एशिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ओके, इट contributes around 84% of coal production in India itself. भारत का 85% कोयला कोल इंडिया लिमिटेड माइन करके निकालता है, which is huge. Okay, which is huge. Okay, now CIL was conferred the Maharatna status. Coal India Limited is a Maharatna company by the union government. It is operating through 82 mining areas. इसकी 82 mines हैं। KGF देखिए दोस्त, रॉकी भाई देखा है राइट? केजीएफ वो गोल्ड में जैसे माइन होती थी वैसे कोल की माइन होती है। वो गोल्ड की माइन थी, ऐसी कोल की माइन होती है। I'm just telling you what mining and mine is so that you now know. KGF was gold mines, right? This is coal mines. Okay. फिलॉसफी दिख गई दोस्त, फिर से मेरे को फिलॉसफी दिख गई। क्या करें, याद रखना पड़ेगा। यस, रखना पड़ेगा। विजन दिया है आपको, इसका मिशन दिया है आपको, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, पोर्टफोलियो आ गया दोस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मैं गारंटी से दे सकता हूँ एक क्वेश्चन तो एग्जाम के यहीं से आने वाला है, राइट? कैन अ सीए बिकम सीएमडी इन कोल इंडिया लिमिटेड? नो चांस दोस्त, नो चांस। आईएएस ही बनते हैं, राइट? बट योर फादर ओन्स अ माइन इन जोधपुर, तो व्हाई आर यू स्टडीइंग? आप तो माइनिंग कर रहे हो यार। आई एम जस्ट जोकिंग, यू शुड स्टडी, ऑब्वियसली यू शुड स्टडी, दैट्स गुड। इफ आई गेट अ चांस आई विल कम सी योर माइन। जोधपुर तो पास में ही है। ये केजीएफ बोला, पीपल आर कमिंग विद केजीएफ कलेक्टेड 1250 करोड़। हाँ, आप भी पढ़ लो ताकि आप भी 1250 करोड़ कमा सको। Bharat is the new Rocky Bhai for us. His father owns a mine. Okay, great. Coming back to portfolio of companies, we're going to talk about its subsidiaries. दोस्त एग्जाम में इतनी बार आया ये क्वेश्चन, में बोर हो गया हूँ इससे। इतनी बार क्वेश्चन आया, मैं हर बार ही क्वेश्चन देखता हूँ, लाइक बॉस ये तो हर बार ही आ रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरीज आर ऑलवेज आस्क्ड, और इट्स सिंपल क्वेश्चन। नाम पूछेंगे और पूछेंगे आपसे कि भैया किसकी सब्सिडरी है, या फिर पूछेंगे, दे विल आस्क, दे विल गिव यू 4 नेम्स एंड दे विल से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया। दो ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इससे, राइट? बट नाम पता होने चाहिए ना, दिक्कत ये है कि नाम पता होने चाहिए। नाउ टू रिमेंबर द नेम्स, इट इज अगेन वेरी इजी। The name has east, west, central, southeastern, northern and महानदी and आपका भारत। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हमको समझ आ गया, इजी है, याद रखना। कोलफील्ड 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 लिख दिया दोस्त, कोल इंडिया की तो होगी, और कहां से होगी मुझे बताओ। कितना सिंपल है, राइट? एंड में लिमिटेड आ रहा है, वो तो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कितना सिंपल है, बट क्वेश्चन हर बार ही आएगा। ओके, रिमेंबर दिस। सैंडस्टोन माइन, ओके थैंक्स भरत। सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन देखने आ जाएंगे हम। यू इनवाइट अस, वी आई विल बी देयर फॉर श्योर, राइट? इट इज द एट्थ होली ओन्ड सब्सिडरी। ये तो 7 पढ़ ली हमने, 7 सब्सिडरीज। इसकी एट्थ होली ओन्ड सब्सिडरी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड प्रोवाइड्स एक्सप्लोरेशन प्लानिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट टू ऑल द 7 ऊपर वाली। इन ऊपर की 7 सब्सिडरीज को एक और सब्सिडरी बनाई जो इनको प्लानिंग की सर्विसेज देती है, ट्रेनिंग की सर्विसेज देती है। उसको भी बोलते हैं सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ठीक है, रिमेंबर फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, आएगा आएगा।
जॉइंट वेंचर्स आएंगे क्या इसके? यस, ये भी एग्जाम में है. 2 बार आई हैव सीन दिस क्वेश्चन एंड नोबडी कुड आंसर, एटलीस्ट द पीपल आई नो, राइट, और हु रीच्ड आउट. सीआईएल की 2 जॉइंट वेंचर्स, एवरीवन कह रहे इतना मुश्किल है याद ही नहीं रखना, इतना सारा थोड़ा याद रखेंगे, बट रख लेना दोस्त. एवरी मार्क काउंट्स फॉर व्हाट यू कैन रिमेंबर एंड इट इज इजी. इंटरनेशनल कोल वेंचर, अभी कोल वेंचर किसका होगा दोस्त? कोल इंडिया का ही तो होगा. सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, a joint venture between CIL and NTPC. This is you have to remember. तो remember, कोल से बिजली बनती है. Coal is used to generate electricity. तो ऊर्जा means electricity. ऊर्जा का joint venture कोल और NTPC का है. Simple, very simple, right? 5 of them are directions. That is right. Perfect. Let's go to the next one. Subsidiary पता है हमें क्या होता है? Do we know what a subsidiary is? What is a subsidiary? हमने सब्सिडीज के बारे में तो पढ़ लिया कि these are the 7 subsidiaries of Coal India. 8 subsidiary services provide करती है, but what is a subsidiary? होती क्या है? तो सब्सिडरी होती क्या है? What is a subsidiary? फुल फॉर्म पूछते हैं कि आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है. फुल फॉर्म भी आ सकती है. फुल फॉर्म तो सबसे इजी चीज है. फुल फॉर्म तो सबसे, CIL का फुल फॉर्म अगर कंपनी आपको BCK के एग्जाम में CIL का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जो कि आता नहीं है, CIL आपका सिप्ला का आ सकता है. व्हाट इज द ओल्ड फुल फॉर्म ऑफ सिप्ला, ऐसा आ सकता है. बट अगर CIL भी लिखा हो तो और क्या ही होगा मेरे को बताओ, और कौन सी कंपनी होगी? कैडबरी इंडिया लिमिटेड. आपको पता है कैडबरी तो हमने पढ़ी ही नहीं है सिलेबस में, कैसे होगी? और कौन सी होगी? कैडिलैक. कैडिलैक भी हमने नहीं पढ़ी है, राइट? और कौन सी होगी? कोल आपने पढ़ा, आपको समझ आ जाएगा, ये सरकारी कंपनी का है. दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी सिंपल. ओके, सब्सिडरी क्या होती है दोस्त? ओके, a company holds 51% of other company, it will become subsidiary. Absolutely simple as that. इससे सिंपल कोई डेफिनेशन नहीं है. सिस्टर कंपनी, सिस्टर कंपनी हो सकती है, सब्सिडरी है, पर क्या? आपने तो अलग ही डेफिनेशन दे दी. सिस्टर कंपनी, सब्सिडरी क्या होती है? which is held by a holding company. Very good. होल्डिंग कंपनी क्या होती है फिर? आंसर मुझे मिल चुका है. If a particular company has more than 51% shares of some other company, it becomes a subsidiary. And when we say a wholly owned subsidiary, that means 100% shares दूसरी कंपनी के इस कंपनी के पास हैं. दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स अगर किसी कंपनी के पास हैं तो इट इज कॉल्ड होली ओन्ड सब्सिडरी. इट इज कॉल्ड होली ओन्ड सब्सिडरी. होली ओन्ड, पूरा मेरे पास है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज डॉक्टर रेड्डीज. डॉक्टर रेड्डीज, ओके, डॉक्टर रेड्डीज क्या है दोस्त? डॉक्टर रेड्डीज अपने सिप्ले का भाई है. सिप्ला जो बंद करता है डॉक्टर रेड्डीज भी वही करता है. बट डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, right, and manufactures and markets a wide range of pharmaceutical India and overseas. फिर से फार्मा इंडस्ट्री की कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज, हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद. हैदराबाद की कंपनी है दोस्त. ओके, चेयरमैन इज कलाम सतीश रेड्डी. ओके, वेरी गुड. फिलॉसफी दिख गई, याद रखना है, सब कुछ याद रखना है. पोर्टफोलियो दिख गया, बाप रे. दवाइयों के नाम याद रखने हैं क्या? नहीं, इतने तो आई एम प्रिटी श्योर हमें भी याद नहीं रहते, तो आपसे क्या पूछेंगे, राइट? डू आई नीड टू रिमेंबर? फॉर एग्जाम्पल स्टैमलो, एमलो डिफाइंड बिसेलेट, क्या मेरे को याद रखना है? ये आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, हाँ, ये मेरे को क्या याद रखना है? डू आई हैव टू रिमेंबर केटोरालैक थेरामेटोथामाइन? नहीं दोस्त, इतना तो एग्जामिनर क्या हमें किसी को नहीं आता, ये तो आपसे कैसे पूछेंगे? सो डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड हियर अगेन. You will not be asked the names of the brands, at least in pharma. ठीक है, एटलीस्ट फार्मा कंपनी के नाम तो आपसे नहीं पूछेंगे. बजाज के मोटरसाइकिल का पूछ सकते हैं, बट आपसे ये नहीं पूछेंगे. ठीक है, जेनेरिक ओवर द काउंटर ऐसे पूछ सकते हैं कि जेनेरिक दवाइयां बनाती है, ओवर द काउंटर दवाइयां बनाती है, हाँ जी बनाती है. ओके, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट पढ़ने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो. आई नीड टू कवर फ्लिपकार्ट, भाई सबको पता है. I don't want to spend time on Flipkart, but very quickly, 30 seconds. Company introduction, founded in October by Sachin Bansal, Binni Bansal,
ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं ये लोग, राइट? कल्याण कृष्णमूर्ति इज द सीईओ, श्रीराम वेंकटरमन इज द सीएफओ। ओके, वेरी गुड। फिलॉसफी क्या है? अच्छा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इन 2018 वॉलमार्ट ने 81% ऑफ द शेयर्स ऑफ फ्लिपकार्ट खरीद लिए फॉर $16 बिलियन। 81% shares खरीद लिए for $16 billion, and that is why it is owned by Walmart now. It is no longer an Indian company, दोस्त. It is no longer an Indian company. It is an American company. Flipkart is an American company now because 81% shares तो भाई Walmart ने खरीद लिए. Walmart is an American giant. अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी जो है वो है वॉलमार्ट. अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट. उसने फ्लिपकार्ट के दोस्त 81% शेयर्स खरीद लिए. ओके, फिलॉसफी याद रखना पड़ेगा. हाँ जी, पोर्टफोलियो आ गया. पोर्टफोलियो तो बहुत आसान है. मिंत्रा ओन्ड बाय फ्लिपकार्ट, जबोंग ओन्ड बाय फ्लिपकार्ट, फोन पे ओन्ड बाय फ्लिपकार्ट, ई कार्ड, जीव्स, टू गुड, ऑल दीज आर फ्लिप. जो कंपनीज थी सब इसने खरीद ली. फ्लिपकार्ट ने अपनी सारी ये कंपेटिटर कंपनीज खरीद ली, राइट? फ्लिपकार्ट एंड इट्स सब्सिडरीज. यू हैव टू रिमेंबर, यस, फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेट कंपनी. इंटरेस्टिंग. फ्लिपकार्ट के आगे लिमिटेड लिखा हुआ है क्या? नहीं, इट इज अ प्राइवेट कंपनी. इट इज अ प्राइवेट कंपनी. क्या आप शेयर्स खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट के? नहीं. क्या मैं खरीद सकता हूं? नहीं. क्या कोई और बड़ी कंपनी रिलायंस जाके फ्लिपकार्ट के शेयर्स खरीद सकते हैं? नहीं. इट्स अ प्राइवेट कंपनी. इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी. उसके शेयर्स नहीं है, कोई मार्केट में शेयर्स नहीं चलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स नहीं है. कोई भी आके उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते. इट्स अ प्राइवेट कंपनी. वॉलमार्ट ओन कर रही है, वॉलमार्ट संभाल रही है वो कंपनी, राइट? शॉप्सी भी खरीद लिया है. शॉप्सी खरीद नहीं लिए, बना दी है. खरीद के बना दिया, छोटा सा खरीद के बड़ा बना दिया है. ठीक है, गॉट इट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. गेल इंडिया लिमिटेड, सरकारी कंपनी दोस्त, बट एग्जाम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ओन्ड बाय होम? गेल इंडिया लिमिटेड इज ओन्ड बाय होम. इसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देखोगे, आप यहां देखोगे इट इज ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, विच इज अगेन अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है. एक मिनिस्ट्री इसको होल्ड करती है. द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ओन्स गेल इंडिया लिमिटेड. न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है. इट्स अगेन, फिर से देखो, पब्लिक कंपनी आ गई, सरकारी कंपनी आ गई, कितना सारा उसके बारे में लिखा है, राइट? कंटेंट में देखिए कितना सारा लिखा है. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम हेयर. प्लीज 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 रीड द पब्लिक कंपनीज very carefully, with all your shiddat, with all your concentration. हेडफोन्स लगा के, जैज चला के, सितार तबला चला के पढ़ना है इसको बड़ा सारा फोकस करके. ओके, क्वेश्चंस कम फ्रॉम these topics the most. ओके, फिलोसफी दिख गई फिर से यार, फिर से पढ़ना पड़ेगा. हाँ जी, यू विल हैव टू रिमेंबर द फिलोसफी. टू बी द लीडिंग कंपनी इन नेचुरल गैस एंड बियॉन्ड. अरे आसान कर दिया ये तो बहुत ज्यादा. नेचुरल गैस लिख दिया आपने तो गेल इंडिया लिमिटेड ही तो होगा. एयरटेल गैस अगर मैं लिख दूं टू बी द लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी, एयरटेल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और गेल, आंखें बंद करके गेल कर देना, राइट? द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर इज इट इज द नाइटमेयर ऑफ द एग्जामिनर, बट इट इज द फेवरेट चैप्टर ऑफ अ स्टूडेंट और द पर्सन हु इज गिविंग द एग्जाम्स. Let's say for you or me to create a question out of the vision और द मिशन इज अ नाइटमेयर. मैं विजन और मिशन थोड़ी ना चेंज कर सकता हूँ कंपनी का क्वेश्चन के लिए. और उसने अपने विजन और मिशन में नेचुरल गैस वर्ड दे दिया, विच मीन्स आपके तो मजे आ गए. एग्जामिनर बेचारा कह रहे क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, he or she will give a mark to the student because the idea is for you to learn new things as well, right? While competing with a lot of people, of course, इंडिया में रहते हो, जनता ही जनता है, 150 करोड़ लोग हैं, फाइट तो करना पड़ेगा. इट्स हाईली कम्पिटिटिव. दैट इज हाउ इट इज फॉर अस. बट ठीक है, दैट इज वेयर वी आर. अब तो रियलिटी है वो. अब हम नॉर्वे में पैदा तो हुए नहीं, राइट? जहाँ पे पॉपुलेशन ही 3 करोड़ है, जितने हमारे गांव में होते हैं. ओके, so vision and mission, there are keywords which will help you identify the company itself. It becomes easy for you. Okay, great. सब्सिडी आ गई फिर से इसकी. इतनी सारी सब्सिडी और जॉइंट वेंचर्स है गेल की.
देख लो कितनी बड़ी कंपनी है, राइट? इट हैज 3 सब्सिडरीज एंड इट हैज ऑलमोस्ट 10-11 जॉइंट वेंचर्स। क्या नाम याद रखना पड़ेगा? जरूरत ही नहीं है। पढ़ के देखो सारे नाम, सब में गैस और नेचुरल गैस आ रहा है, सब में गैस और नेचुरल गैस आ रहा है। नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत है ताकि आपको पता चले, राइट? कि यार जी, कंफ्यूज करने के लिए दे कैन ऑल्सो गिव यू नेचुरल गैस लिमिटेड एज ए कंपनी वर्सेस गेल इंडिया लिमिटेड एज ए कंपनी, तब फंस जाओगे। ऑप्शन में दोनों गैस की कंपनी डाल दी अगर कोई और, तब फंस जाओगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर सिलेबस में कौन सी कंपनीज हैं। गेल पढ़ा था या नेचुरल गैस पढ़ा था? हमने गेल पढ़ा था, तो गेल ही होगा आंसर। तुक्केबाजी ऐसे भी चलती है, राइट? सो बट यू ओनली व्हेन यू लर्न और एटलीस्ट रीड थ्रू दिस टॉपिक, दैट विल ओनली हेल्प यू। राम भरोसे मत जाना। ओके, do I need to remember the percentages stake of this particular company which is Gale in the joint ventures? Same as incorporation year and the ranking. कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं कर सकते do not scratch your heads for it. Okay, you do not have to spend hours to make notes कि इसका इतना परसेंट भाई कुछ और। इससे बेटर वो टाइम लगा के अकाउंट्स पढ़ लेना जिसमें मार्क्स नहीं आते, राइट? Just giving you more insight about the entire thing. Okay, it is not like मैं BCK पढ़ा रहा हूँ तो आपको सिर्फ BCK ही करवाऊंगा, right? It's about clearing your exams at the end of the day, right? So use the time. You can skip certain topics and use in your weak areas whatever subject it is. दोस्त पास होना मेन है. Okay, बिजनेस इन द न्यूज अगेन, नहीं टाइम मिलेगा भाई छोड़ देना, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन आएगा पूरे में से, पूरे BCK में से आप छोड़ भी सकते हो, बट अगर टाइम है, यू वांट एक्स्ट्रा मार्क, go for it. Cool. Let's go to the next one, which is HDFC Bank Limited. HDFC Bank Limited is full form. कौन बताएगा मेरे को HDFC की? देखते हैं. Let's see. Okay, very good. Great question from me. Thank you so much. शाबाशी. HDFC का full form बताओ कोई मेरे को. What is HDFC का full form? HDFC का full form क्या है दोस्त? HDFC का full form. पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। यस, यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी एज वेल मनीषा, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, बट फिर हिंदी में आप इंग्लिश नहीं लिख सकते। आप इंग्लिश वाली हिंदी नहीं लिख सकते, फिर उसमें हिंदी लिखनी पड़ती है पूरी। इफ यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हो हिंदी में, आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है, राइट? अगर आप पूरा लिख सकते हो कि HDFC बैंक इस समय इतने यहाँ पे मेरे को तो इनकॉर्पोरेट, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द हिंदी, इनकॉर्पोरेट वर्ड भी आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा फिर, राइट? इफ यू आर गुड एट इट, इफ यू आर गुड एट इट, आप वो कर सकते हो, यू शुड डू इट, वट एवर यू आर कंफर्टेबल। ऑप्शन मिलता है, ICI गिव्स यू एन ऑप्शन टू गिव इन हिंदी एज वेल। सब गूगल करने में लग गए, देखा? आई न्यू इट। इतना भी नहीं पता है भाई, स्कूल क्लियर हो गया, अभी तक HDFC का फुल फॉर्म नहीं पता। बताओ, मम्मी पापा से पैसे लेते थे, वो इसी बैंक से निकाल के देते थे आपको। हाउ मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस चैप्टर? नोबडी नोज। हो सकता है 0, हो सकता है 20, nobody knows. The weightage, ऐसा कोई weightage नहीं है दोस्त, there is no weightage to any chapters. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ब्रैकेट गूगल, आई लव द ऑनेस्टी, ठीक है? गूगल लिख दो सामने से, हमने गूगल किया है, बेस्ट है। ओके, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका एक बैंक बनाया, उस कंपनी ने एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा HDFC बैंक, headquartered in Mumbai. Okay, headquartered in Mumbai. The bank's distribution network is run through 4,715 branches and 12,260 ATMs across 2657 cities. आप सिंपल समझो कितना बड़ा बैंक है, 2600 सिटीज में इसकी ब्रांचेस हैं दोस्त, इसके ATMs हैं 4,715 ब्रांचेस, 12,500 ATM प्लस 2600 cities में प्रेजेंस। इट इज ह्यूज, इट इज ह्यूज। ओके, नाउ एग्जाम क्वेश्चन, इसके बाद की 3 लाइनें पूरा एग्जाम क्वेश्चन है।
It provides a series of digital offerings: 10-second personal loan, chiller, pays app, SME bank, watch banking, 30-minute auto loan, 15-minute two-wheeler loan, e-payment gateways. Every single word is an examination question. Okay. Pays app. कौन प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज ऑफ पेज ऐप? HDFC. कौन प्रोवाइड करवाता है चिल्लर सर्विसेज? HDFC. कौन प्रोवाइड करवाता है 15-मिनट टू व्हीलर लोन? HDFC. कौन दिलाता है 30-मिनट ऑटो लोन? HDFC. ऐड नहीं कर रहा हूं इसकी, दिस इज व्हाट इज देयर इन द सिलेबस. ओके, नाउ फिलॉसफी दिख गया मुझे, तो फिलॉसफी दिख गया. देयर इज नो वेटेज स्वाति, कोई वेटेज नहीं किसी भी चैप्टर की. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वेटेज नहीं है किसी चैप्टर की. मेंटली यू कैन से ठीक है, 10-10 मार्क्स लगा लो, 8-8 मार्क्स लगा लो, कोई वेटेज नहीं है. हो सकते 2 क्वेश्चन ऐसे, हो सकते 10 आ जाए, हो सकते 15 ही आ जाए. ओके, देयर इज नो वेटेज. इट क्रिएट्स मोर इंटरेस्ट इन द एग्जामिनर. ओके, द मिशन इज देयर अंडर फिलोसफी. चार्ट लेना दोस्त. ओके, देन देयर इज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है? HDFC ग्रुप, HDFC लिमिटेड, HDFC सिक्योरिटीज, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC रियल्टी, HDFC लाइफ, HDFC अर्गो, HDFC पेंशन, HBD फाइनेंशियल सर्विसेज. ओके, all of these are the products and services provided by HDFC. म्यूचुअल फंड्स में हेल्प करता है, रियल्टी में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है, बैंकिंग में हेल्प करता है. It is an investment planner, it is a financial services company, it is a bank, it helps in treasury, it helps in life insurance, it helps in vehicle insurance. सब कुछ आपका related to financial services, everything related to finances is what HDFC as a group provides. Okay, great. अगर हमें कोई कंपनी चाहिए तो हमें उस कंपनी के सारे शेयर्स बाय करने होंगे क्या? सारे का कोई कंपनी चाहिए, आप मेजॉरिटी शेयर्स ले सकते हो, तब भी बात बनेगी. 51 से ज्यादा ले लो, राइट, तब भी आप कंट्रोल कर सकते हो. ऑब्वियसली आपको शेयर्स खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, राइट. आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, पैसे देते हो. सिमिलरली आप मार्केट में जाते हो, किसी को बोलते हो मैं आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, दे विल ऑब्वियसली आस्क फॉर मनी ना, कि भाई पैसे दो और खरीद लो मेरे से, फ्री में क्यों देंगे? अनलेस दे योर ब्रदर, सिस्टर्स और स्पाउस, तब आप लड़के ले सकते हो, तब नहीं पैसे देने पड़ेंगे. ओके, ग्रेट, तब आपको लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे. द नेक्स्ट वन इज ICICI बैंक. एक्सिस पढ़ लिया, HDFC पढ़ लिया, तीसरा इज ICICI. आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस, you can read it on your own. Same thing, almost the same thing, same way you have to prepare it. Axis पढ़ा, HDFC पढ़ा, अब देखो ICICI भी पढ़ लिया. अब क्या होगा एग्जाम में? यू विल गेट कंफ्यूज्ड. आज तो आपको समझ आ रहा है कि पेज ऐप किसका है, 15-मिनट टू व्हीलर लोन, 30-मिनट होम लोन, HDFC का है, पढ़ोगे समझ आ जाएगा. एक हफ्ते बाद पूछेंगे, आप गोल हो जाओगे कि यार ये एक्सिस था, ICICI था या HDFC था. इसीलिए यू विल हैव टू रिमेंबर. इसीलिए you will have to remember stuff. This is what I'm saying. When you're reading, it's easy. After a week, everything washes out, and you know that these banks are in the syllabus as well. कैसे याद करूंगा भाई? करना पड़ेगा. Okay. Cool. You will cover this. You know philosophy, portfolio. You will study. I'm confident you'll cover this. You have to cover this. Even if I'm not confident, आपको करना ही पड़ेगा. Indian Oil Corporation, government company दोस्त. Again, right? Again, it's a government company. Indian Oil Corporation सरकारी कंपनी है. बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे. It is India's largest commercial enterprise. इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल, इंडियन सरकार, भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है इंडियन ऑयल. LIC भी बहुत बड़ी है, बट इंडियन ऑयल उससे भी बड़ी है. इंडियन ऑयल उससे भी बड़ी है. ओके, इंडियन ऑयल अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट शेयर. इंडिया का आधा पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडियन ऑयल से ही आता है, इंडियन ऑयल ही बेचती है. ओके, इंडिया की 35% रिफाइनिंग कैपेसिटी, तेल को निकाल के साफ करने की कैपेसिटी इंडियन ऑयल के पास है.
बाकी रिलायंस के पास है, कुछ और पेट्रोल भारत पेट्रोलियम के पास है, किसी और के पास है, राइट। इंडियन ऑयल के पास 35%, विच इज द बिगेस्ट शेयर, मार्केट शेयर है, वो इंडियन ऑयल के पास है। ओके, फिलॉसफी, vision or mission? Yes, to maximum creation of wealth and satisfaction for stakeholders, shareholders. Yes, that is the mission of Indian Oil, to achieve international standards of excellence in all aspects of energy and diversified business. ये देखो, ये है ना interesting. Absolutely, भारत पेट्रोलियम अब आपको confuse करेगा. That is what I was saying. As the chapter unfolds, things start becoming confusing because अब पेट्रोल की 2 कंपनी हो गई, बैंक 3 हो चुके हैं, एयरटेल हमने पढ़ लिया, एयरटेल फिर भी इजी होगा, हमने पेंट्स पढ़ लिया, पेंट फिर भी इजी होगा, अदानी अदानी फिर भी इजी होगा. बट कंपनीज विच हैव कंपेटिटर्स विच आर आल्सो देयर इन द सिलेबस, बॉस, एग्जाम में बैंड बजाते हैं ये कंपनीज, आई कैन टेल यू, राइट. उस टाइम यू हैव टू बी क्विक, उस टाइम यू हैव टू रिमेंबर, यू कैन नॉट पैनिक, राइट. तब आएगा मजा. नाउ लुक एट द विजन एंड मिशन ऑफ अपना इंडियन ऑयल. पहचान ही नहीं पाओगे भाई, ऑयल की बात हो रही है, राइट. विजन में स्टिल यू विल सी ऑयल सिक्योरिटी एंड यू विल लाइक हाँ ठीक है ऑयल कंपनी है. मिशन से बताना मुझे ऑयल कंपनी का है. टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी. ये तो गेल भी हो सकती है, तो कोल इंडिया भी हो सकती है, ये तो मेरी आपकी इंडियन ऑयल भी हो सकती है, ये तो मेरा कोई भी सरकारी कंपनी हो सकती है दोस्त, एनर्जी के लिए एनटीपीसी हो सकती है, राइट. एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस विद फोकस ऑन कस्टमर डिलाइट थ्रू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कॉस्ट रिडक्शन. कंफ्यूज कर देगा, स्टार कर लो. जो चीज एग्जाम के लिए कंफ्यूजिंग बना सकता है उसको स्टार कर लो, सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर, रीडिंग दिस चैप्टर अगेन, you read this thing specifically twice at least, so that you remember, boss, इधर वाट लगने के चांसेस ज्यादा हैं. ओके, डिफरेंस बिटवीन भारत पेट्रोलियम, इट्स अ डिफरेंट कंपनी, कंपेटिटर है, अलग कंपनी है, राइट. एकदम ही अलग कंपनी है. पोर्टफोलियो, इंडियन सब्सिडरीज, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन. ये तो भारत पेट्रोलियम की भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, कंफ्यूज करेंगे ना आपको, राइट. इंडियन ऑयल क्रेडा बायोफ्यूल्स, इजी हो गया. इंडियन कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, वेरी कंफ्यूजिंग. एग्जाम क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्त, यहां से एग्जाम क्वेश्चंस बन रहे हैं, राइट. दिस इज वेयर यू स्टार्ट फीलिंग कि यार अब टफ हो जाएगा. कुछ कंपनीज आपको टफ बना देंगे एग्जाम. वन ऑफ दैट इज इंडियन ऑयल, राइट. वन ऑफ दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, राइट. थैंक्स काव्या, आई एम एंजॉयिंग स्टैंडिंग, राइट. बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, आज खड़े होके करेंगे. ऑल्सो रिमेंबर फॉरेन सब्सिडीज, राइट. फॉरेन सब्सिडीज में फिर से इट इज इजी बिकॉज इट इज इंडियन ऑयल, लंका आईओसी, आईओसी आईओसी आईओसी, हर जगह आईओसी आ रहा है. आईओसी इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, राइट. फॉरेन सब्सिडीज में फिर भी इट इज बिकमिंग इजी. इंडिया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और टफ बनाएगा आपको. सो रिमेंबर दिस, पुट अ सर्कल, पुट अ स्टार, व्हाटएवर यू डू, हाउएवर नीट यू आर. मैं तो बहुत गंदा मार्किंग करता था. If you're neat, just note it down somewhere, put a star or whatever suits you. That Indian Oil Corporation को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है because it is confusing. Because it is confusing and questions will come from it. Okay, because it is confusing. Let's go to the next one. Question आ गया एक और. ये जो पूछा था आपने यहाँ है. You're observing rankings from Forbes, right? This shows how well a company ranks on global level, right? यही फोर्ब्स जो मैगजीन है वो रैंकिंग करता है कि ग्लोब में ये कंपनी कहां स्टैंड करती है. ओके, नेक्स्ट इज इन्फोसिस लिमिटेड. कौन बताएगा इन्फोसिस क्या करता है दोस्त? इन्फोसिस काम क्या करता है? कौन सी इंडस्ट्री है इन्फोसिस? इन्फोसिस क्या काम करती है? इन्फोसिस का क्या काम है? सर्विस इंडस्ट्री. Ranjay, your bhaiya works in Infosys. Awesome. He's an engineer. IT, technology, service industry. What else? What else?
वेरी गुड. मनीष से इट्स अ कंपनी इन बैंगलोर. मनीष से कोई पूछेगा मनीष आपका नाम क्या, मनीष कहेगा मैं पटना में रहता हूँ. मनीष नाम पूछे हमने, सिटी बता रहे हो. Software company, information and technology, IT sector, computer. Okay, it is an information technology company which provides IT services to other companies. For example, just समझ let me just ask you. हम लोग ये बहुत पढ़ते हैं, but I've seen people don't know what do IT companies do. IT companies like TCS, Tata Consultancy Services, Wipro, Infosys, those से companies IT company बोलते हैं इनको, right? These are information technology companies. ये करती क्या है? Can you give me a real life example of a particular product that you have seen that these companies make or these companies help? क्या काम करती है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है. They have like 2 lakh people as employees. Wipro has 2 lakh people. Infosys has 3 lakh people. TCS has 8 lakh people. 8 लाख लोग काम करते हैं TCS में. करते क्या है दोस्त से? काम क्या है? कुछ एग्जाम्पल कैन सबडी टेल मी. आईटी कंपनीज का काम कुछ रियल लाइफ आपने देखा हो अपने आसपास कि ये चीज इन्होंने बनाई है. प्रोग्राम्स. ओके, Apitanga, you're telling me programs. It's a very generic word. Help me understand more. What programs? क्या बनाती कुछ? Have you seen anything around you that these companies have made, or you know some kind of product that IT companies have helped in creating? Google? No. Google तो अपने आप में कंपनी है. IT companies are not making Google. Provide softwares like ERP, absolutely yes. Tally जैसे काम हो गए या SAP हो गया, right? These are separate companies altogether, but somewhat yes, okay. They help in implementing these softwares. They help in building these softwares, which is true. Which is true. What else? कुछ मजेदार आइडिया दो. ये तो जेनरिक बता रहे हो आप. आसपास देखा है कुछ? New technology, data entry, right? They also help us CS. They program many softwares, accounting easier. Okay. Let me give you an example. Okay, let me give you an example and you will be like, अच्छा ये काम करती है ये company. Have you been to any of the metros? कभी metro use की है? And you have that swipe card, right? If you go to a metro or if you go to a credit card, right? Credit card use करते हो या कोई, let's metro का example लेते हैं. Metro में you go and you swipe your card, you do an entry, there are those gates, right? आप swipe करते हो, उस कार्ड में पैसे होते हैं, कार्ड से पैसे कटते हैं. You drop at another station, the card calculates how far, which station to which station you have gone, deducts that much money and you exit the station, right? ये जो सॉफ्टवेयर है ना मेट्रो का, this software of metro, this is what these companies develop, right? इन्फोसिस ने बनाया है वो, विप्रो ने बनाया है वो. इनकम टैक्स वेबसाइट, जीएसटी वेबसाइट, जीएसटी की वेबसाइट पे देयर आर crores of people coming and giving information to the government, uploading files, uploading data, changing numbers, filing taxes, paying taxes, then using that to prove their standing, to use that information for their business. इतना बड़ा web of information IT companies, Infosys, Wipro, TCS, ये सब काम करते हैं, right? I'm just giving you an example. Think about airports. Airport पे you have that app में जाओ, digital आप login करो, you have a boarding pass. You scan that on their machine, right? Machine में जाते हो, ticket में scan करते हैं, you enter. IT companies build that software, right? IT companies build that software. You go to a lift में आप 5 दबाते हो, लिफ्ट 5 नंबर पे जाती है. उस लिफ्ट का सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज मेक दैट सॉफ्टवेयर. ओके, these are the kind of things that these softwares do, right? ICI website and BOS app, absolutely built by IT companies, Infosys, Wipro, TCS. इतना काम है इनके पास. That is why they have lakhs and lakhs of people in their company, right? ये तो छोटे छोटे काम बता रहा हूँ. They are big companies. Let's just take an example of Indian Oil Corporation. इससे पहले पढ़ा है.
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को कितने सारे सॉफ्टवेयर चाहिए just to operate, just to operate. I'm just not talking about accounting or finances or banking. वो तो चाहिए ही. बाकी ऑपरेशंस के लिए कितना सारा काम चाहिए. मैनेजिंग द एम्प्लॉइज, मैनेजिंग क्वालिटी, क्वालिटी चेक करने के लिए कितने सारे टूल्स होंगे जिनके अंदर कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होगा, राइट? कि तेल की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, कितने बड़े बड़े हैं, हीट पे रखना है, इतना बड़ा उसमें रखना है, ठंडा होने देना है. देयर वुड बी मल्टीपल थिंग्स दैट दे आर मैनेजिंग. Those under softwares within that, the technical part, the technical aspect to that technology, IT companies provide that. Okay, इसलिए ये होता है अपना IT companies. Spent a lot of time here, but I think that is important because syllabus आप पढ़ लोगे, but you relate more to a company when you understand भाई वो करती क्या है. ना पढ़ तो लोगे, रट तो लोगे, but करती क्या है, right? Infosys Limited, an IT company, started by 7 engineer friends. 7 engineer friends थे, सबके नाम आपकी स्क्रीन पे हैं, right? This is what they started their company in 1981, right? It is India's one of the biggest IT companies in the world as well. And India may be top 3 IT companies, which is TCS, Infosys, Wipro. Number 2 पे Infosys है, number 1 पे TCS है, number 3 पे Wipro है. Right? Indian IT companies where Infosys is one of the biggest IT companies with a lot of presence in Europe now, with a lot of presence in US, with a lot of presence in Southeast Asia as well. Okay. Philosophy, vision, mission याद रखना है, yes रखना है, portfolio yes रखना है. पोर्टफोलियो से बाप रे इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको Infosys के पोर्टफोलियो से always, because they have given the name of certain products that Infosys has built. Right? Mana knowledge based AI platform. Then there is Infosys information platform, IIP, Edgeverse, Finacle, right? Panaya Cloud Suite. Then you have Scala, right? What is happening? What is happening? ये सारे products, all these softwares, all these products are built by Infosys, right? For different industries, अब इसमें क्या होता है? These IT companies provide these softwares and earn revenues from it. From exam perspective, these will come in questions. Okay. Edgeverse Systems is a product offered by which IT company? Wipro, Infosys, TCS, Accenture. Infosys आपको पता होना चाहिए, right? Does manufacturing industry machines are done by IT companies only? The softwares within them, not the machine building, but उसके अंदर का software, they do help and support, if not create, but उसका implementation, उसका maintenance is what they do help in. Okay, great. Let's go to the next one. ITC Limited. ITC Indian Tobacco Company cigarettes बनाती है, क्लासमेट की बुक्स बनाती है, आईटीसी सनफीस्ट की आप जिप्पी खाते हो, राइट? आईटीसी का आप आशीर्वाद आटा खाते हो, राइट? आईटीसी की सिगरेट्स पीपल स्मोक, राइट? पीपल स्मोक. वो आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय इन 1910, ओन्ड बाय आईटीसी ग्रुप, हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है. ठीक है. इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी, right? It started as a private company in 1910 under the name of Imperial Tobacco Company of India Limited. Later it was renamed as Indian Tobacco Company and आज की डेट में उसको ITC Limited बोलते हैं. अब इसका कोई फुल फॉर्म नहीं रहा. There is no full form for ITC as on date. They said हमको tobacco word अपनी कंपनी में चाहिए ही नहीं, गलत इमेज देता है. So they removed and they called themselves as ITC Limited itself only. Okay, perfect. याद रखेंगे इट इज एन एफएमसीजी, होटल्स में है, पेपर बोट्स में है, पैकेजिंग में है, एग्रीकल्चर बिजनेस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है. आईटीसी ऑल्सो हैज income or your information technology business as well. It's a conglomerate. What is a conglomerate? Conglomerate is a company which does unrelated businesses. Biggest example being Tata.
टाटा भाई साहब नमक भी बनाता है, टाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करता है, टाटा गाड़ियां भी बनाता है, टाटा सब कुछ करता है। टाटा का पानी भी आता है, टाटा का खाना भी आता है, टाटा की चाय भी आती है, टाटा का नमक भी आता है, टाटा की गाड़ियां भी आती हैं। राइट, टाटा का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया का सबसे बड़ा, टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी भी है। ओके, टाटा इज अ कॉन्ग्लोमरेट। सिमिलरली आईटीसी इज अ कॉन्ग्लोमरेट। इट डज a lot of unrelated businesses. क्लासमेट की बुक्स बना रहे हैं, रफ कॉपी बना रहे हैं, रजिस्टर्स बना रहे हैं, सिगरेट बना रहे हैं, आटा बना रहे हैं, yippee नूडल्स बना रहे हैं। दे डू अ लॉट ऑफ अनरिलेटेड वर्क, अनरिलेटेड बिजनेसेस हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट। ओके, होटल्स हैं आईटीसी के, आईटीसी मौर्य, आईटीसी सोनार बांग्ला, आईटीसी दिस, आईटीसी दैट, आईटीसी ग्रैंड, आईटीसी शेरेटन, राइट? All these hotels, 5 stars, 7 stars, luxury hotels are also owned by ITC. Hotels भी हैं इनके. Okay. विजन मिशन याद रखेंगे. पोर्टफोलियो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे यू विल सी अ लॉट ऑफ नेम्स एज वेल. ये तो आपको याद होने चाहिए, ये आपको हो भी जाएंगे. राइट, एसेंजा डी विल्स, फियामा डी विल्स, विवेल, एंगेज डिओड्रेंट्स, राइट, ये सब आईटीसी के हैं. आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, बिंगो आप खाते हैं, मैड एंगल्स, आईटीसी के हैं. ओके, देन they have cigarettes and cigars like फ्लेक, सिल्क कट, बर्कली, कैप्स्टन, राइट, नेवी कट आती है, गोल्ड फ्लेक आती है, राइट, जॉन प्लेयर आती है. दीज ऑल सिगरेट्स एंड सिगार्स आर मेड बाय आईटीसी. ओके, अगरबत्ती, अगर मंगलदीप अगरबत्ती का अगर आपने नाम सुना, इट इज मेड बाय आईटीसी. ओके, लग्जरी होटल्स में यू विल सी आईटीसी ग्रैंड चोला इन चेन्नई, आईटीसी मराठा मुंबई, आईटीसी सोनार इन कोलकाता, आईटीसी ग्रैंड इन मुंबई. ऑल ऑफ दीज होटल्स आर ऑल्सो फ्रॉम आईटीसी. आईटीसी ओन करता है, आईटीसी होटल का बिजनेस चलाता है. ओके, गार्डेनिया है आईटीसी कट, यू हैव ककटिया इन हैदराबाद, एक्स वाई जी whatever it is. ओके, होटल्स भी आईटीसी ओन करता है. देन यू हैव पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग, राइट, फाइन पेपर्स बनाता है, प्रिंटिंग पेपर्स भी आईटीसी बनाता है. Go ahead, Dinesh. Ask your doubts. We are happy to help. I'm happy to take all the questions. Agriculture business, information technology, ITC Infotech नाम से कंपनी चलाता है, which is into information technology as well. Okay. Conglomerate. We just जो आपका thought bubble है, मैंने वही आपको बताया, right? Unrelated businesses जब कोई कंपनी करती है, उसको बोलते हैं conglomerate. Okay. Cool. Let's go to the next one. Larsen and Toubro Limited. Larsen and Toubro, metro, flyover, highway, right? बड़े बड़े डैम्स. You have this Tehri Dam, Bhakranangal Dam. Dam देखा है आपने कभी? If you ever been to a dam, please go to a dam. It's fantastic to go and watch a dam. Just look at it, how huge that marvel is, right? How huge that construction is. कम से कम 10,000 15,000 गांव को हटा के वो पानी भरते हैं पूरा, and it's huge, right? If you get a chance, just go. If you live in Madhya Pradesh, a lot of dams are there. You live in Maharashtra, a lot of dams are there, right? If you live in hills, like in northern part of India, in Uttaranchal, Himachal, right, Uttarakhand in Himachal, zabardast dams. If you ever get a chance, please go and watch a huge dam. It's fantastic. These kind of constructions, इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, राइट, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, ऑल ऑफ दिस, राइट, पोर्ट बन रहे हैं, शिप डॉक बन रहे हैं, शिप्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शंस होती है, मेट्रो लाइन पूरी अंडरग्राउंड, पूरा शहर नीचे से खोद के मेट्रो चलानी है, राइट, लेजिट. दे डिग द एंटायर सिटी, एंटायर स्टेट, पूरी दिल्ली के अंदर मेट्रो चल रही है, कोलकाता के अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है, मुंबई मेट्रो आ गई, मोनो रेल है, हैदराबाद मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो. लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनीज आर बिल्डिंग दोस प्रोजेक्ट्स, राइट? दैट इज व्हाट लार्सन एंड टूब्रो डज. ओके, दिनेश आपका क्वेश्चन ही नहीं आया, बस आपका एक डाउट, क्वेश्चन ही नहीं पूछा आपने, राइट? ओके, वैष्णवी सीन अ डैम ऑन गंगा रिवर, व्हिच वन? गंगा पे तो बहुत सारे डैम्स हैं. इन ओडिशा ऑल्सो देयर आर ह्यूज डैम्स, दैट इज राइट, राइट. मैं उड़ीसा में भी बहुत सारे, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है आप लोग के पास, राइट. नदर्न वेयर आई स्टे, यहाँ पे बारिश ही नहीं होती, देयर इज नो वाटर, वी आर इन अ ड्राई प्लेस. इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जबरदस्त बारिश होती है, राइट. इन कर्नाटका, इन केरला पानी ही पानी है.
उत्तर प्रदेश कहाँ जाए? उत्तर प्रदेश तो सबसे बढ़िया है दोस्त. यू आर इन द सिटी ऑफ गॉड्स. पूरी सब जनता का आशीर्वाद आप ही के पास बैठा है. ओ, योर डाउट्स आर क्लियर दर्शन. दर्शन, आपका डाउट क्या है? इन्फोसिस में 7% है, बट ये तो कंपनी है दोस्त. दे स्टार्टेड, दर्शन, रीड दैट केयरफुली. इट वाज स्टार्टेड बाय 7 पीपल. अभी उसमें हजारों लोग हैं. उसके शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में. यू एंड मी कैन गो एंड बाय शेयर्स, राइट? वो तो स्टार्ट वैसे हुई थी. इट स्टार्टेड विद 7 पीपल, राइट? अभी तो उसमें हजारों लोग हैं दोस्त. Okay, Larsen and Toubro, I told you what it does. Go through philosophy, go through the portfolio. That is what I was telling. Hydroelectro के cylinders बनाते हैं, nuclear power plant बनाना है, aerospace ports बनाने हैं, defense army की camps बनाने हैं, right? Electrical and automation, right? Systems, product system, low voltage products, motors बनानी है. All of this is coal and mining construction में बड़े बड़े trucks आते हैं, full belt चलती है, right? 5 किलोमीटर्स तक यू हैव दैट कन्वेयर बेल्ट. जो सामान माइन में से निकलता है वो कन्वेयर बेल्ट से बाहर तक जाता है, राइट? वो बड़ी बड़ी बेल्ट्स जो कंस्ट्रक्ट करनी है, दैट इज व्हाट दीज कंपनीज लाइक लार्सन एंड टूब्रो डज. वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो इसकी ये लाइन है, प्लीज ये पढ़ के जाना यहां से. इट वाज फाउंडेड इन 1938 बाय टू इंजीनियर्स फ्रॉम डेनमार्क. डेनमार्क से दो इंजीनियर्स आए, लार्सन एंड टूब्रो. दो इंजीनियर्स डेनमार्क से आए, 1938 में इंडिया आए विद ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दो इंजीनियर्स आए जिसका नाम था लार्सन एंड टूब्रो. दो दोस्त आए जो डेनमार्क से थे. दे स्टार्टेड दिस कंपनी आफ्टर टेकिंग रेफ्यूज इन इंडिया, एंड टुडे इट्स एन इंडियन कंपनी. It's an Indian company. After independence, they stayed here, they continued, and they incorporated it as a company under Indian Companies Act. Simple, right? Perfect. Interesting था इसके बारे में. Okay. Let's go to the next one, which is NTPC, those National Thermal Power Corporation Limited, owned by the Sarkar of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी. अगेन, राइट? फिलोसफी पढ़ेंगे. बनाती है थर्मल पावर. थर्मल क्या होता है दोस्त? व्हाट इज थर्मल पावर? व्हेन आई से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, व्हाट इज थर्मल पावर? बिजली बनाती है, समझ आ गया. पावर जनरेट करती है, समझ आ गया. इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट्स पावर फॉर द कंट्री, बट थर्मल पावर बनाती है, राइट? थर्मल पावर क्या होती है? व्हाट इज थर्मल पावर? कौन बताएगा मुझे? ये तो कॉमन क्वेश्चन है. ये हमने 7th 8th में पढ़ा हुआ दोस्त, एनसीईआरटी की बुक्स में. आई एम जस्ट टेलिंग यू. व्हाट इज थर्मल पावर? ओ, वैष्णवी सिंह, somewhere near Bareilly there's a dam. Perfect, yeah, nice. And I was in Mumbai in the rainy season and I got super enjoyment. I got sick for 7 days. मुझे बहुत मजा आया. बीमारी पड़ा रहा मैं. What can we add with this chartered accountancy course in this 5 years? Graduation करो दोस्त. Learn about certain skills like Excel, right? Learn Tableau, learn digital. जो आजकल all these softwares that you need, if you're expert in Excel, if you're expert in Tableau, if you learn some kind of coding for data management, data, क्योंकि finance में data ही data होता है दोस्त. Data and analysis. If you learn data analysis, some kind of things, right? Google करो दोस्त. You want to take certifications, take certifications. You want to learn free courses, go for free courses. You should do that. Heat से energy. हीट से एनर्जी को बोलते हैं थर्मल पावर. ओके, वेरी गुड. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैम्स इज नोन एज थर्मल प्लांट. वो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है दोस्त, डैम से जो बनता है. डैम तो वाटर है, वाटर इज हाइड्रो. थर्मल होता है हीट. थर्मल होता है हीट, ठीक है? गर्मी से बिजली पैदा करने करती है एनटीपीसी, राइट? गर्मी से बिजली पैदा करते हैं. ओके, नाउ NTPC has embarked upon an ambitious plan to attain a total installed capacity of 130 gigawatts by 2032. अगले 10 साल में they will gain the milestone of 130 gigawatts, right? Now,
विजन एंड मिशन भैया याद रखना पड़ेगा, एब्सोल्युटली यस। एनर्जाइजिंग इंडियाज ग्रोथ, एनर्जाइजिंग, एनर्जी, एनर्जी आ रही है पावर से, पावर है एनटीपीसी। एनर्जाइजिंग इंडियाज ग्रोथ, एनर्जी, एनर्जी मतलब पावर, पावर मतलब एनटीपीसी। ओके, सब्सिडीज के बारे में यू विल हैव टू स्टडी, यस। सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है इसका। एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, फिर देन यू हैव कांति बिजली उत्पादन विच इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, भारतीय रेल बिजली, राइट। देन यू हैव विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत उत्पादन प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एनटीपीसी, right? Remember these names. Remember these names. Energy generated by coal, energy generated by heat is thermal power. NTPC, National Thermal Power Corporation of India, owned by the government of India. लास्ट कंपनी आज पढ़ेंगे जिसका नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड क्या है दोस्त, नाम में ही समझ आ गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस बनाती है, राइट। दिस इज वेयर द एग्जाम बिकम्स इंटरेस्टिंग। इंडियन ऑयल वाला काम करती है ये, भारत पेट्रोलियम वाला काम करती है ये। दोस्त ये अलग कैसे हैं, ये अलग कैसे हैं, राइट। दे आर नॉट अलग एट ऑल। पेट्रोलियम के अंदर ना बहुत कुछ होता है दोस्त। पेट्रोलियम क्रिएट्स पेट्रोल, it creates natural gas, it creates oils of different kinds. ये सब अलग अलग कंपनीज में डाल दिया। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, याद रखने के लिए रिमेंबर दिस, ओके। ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ONGC, यस। गवर्नमेंट के पास कितना शेयर है, 69%, मोर देन 51% है, इसलिए सरकारी कंपनी है। ओके, रिमेंबर द नेम्स ऑफ प्रेजेंट CMD, CFO, यस वी विल। हेडक्वार्टर्स कहाँ है ONGC की, उत्तराखंड में है। जो थोड़ा सा भी ऑफ होगा ना, दिल्ली मुंबई में जिसके हेडक्वार्टर्स नहीं है उसके हेडक्वार्टर्स जरूर पूछे जाएंगे। आई एम ऑल्सो गिविंग यू अनदर एग्जाम insight is, think from an examiner's perspective दोस्त। Whenever you're studying any subject, I'm just giving you some my insights, what I feel for all the subjects. BCK के साथ और भी अलग आप सोचो। Whenever you study a subject, think from the examiner's perspective. Examiner के दिमाग में दो चीज चलती है, एक है आसान क्वेश्चंस देने हैं so that everybody feels confident about a particular exam, okay? उनको वो एग्जाम कॉन्फिडेंस भी देने बच्चे को, राइट। दे हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू द स्टूडेंट एज वेल दैट यू आर डूइंग राइट, यू नो थिंग्स। आपको एक दो सिंपल क्वेश्चंस देंगे एंड देन दे विल गिव यू एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस सो दैट पीपल हु आर नॉट वेरी सीरियस, सो दैट पीपल हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड सीरियसली, वो अपने आप आउट हो जाएं, राइट। यही तो काम है एग्जामिनर का, वो सबको कॉन्फिडेंस देगा दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। वो दो क्वेश्चंस इजी देगा, यू कहे क्या बकवास, इतना इजी क्वेश्चन है, आज तो पास ही पास हूं मैं। एंड देन दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कि बॉस ये क्या है, आई शुड हैव स्टडीड मोर, आई शुड हैव बीन मोर सीरियस, वो आपको रिग्रेट कराएगा क्वेश्चन, राइट। think from this perspective, and when you think from this perspective, easy ones you will anyway do. ये जो दो या तीन tough questions हैं, how will you figure that out is whatever in the syllabus is offbeat. Offbeat का मतलब beyond the normal है। मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, ठीक है, थोड़ा सा यू गेट थोड़ा सा क्लिक कि हाँ थोड़ा अलग चीज है। उत्तराखंड में हेडक्वार्टर है, ज्यादातर कंपनीज का नहीं होता है। द एग्जामिनर विल थिंक only the person who has studied the syllabus will know कि भाई ONGC उत्तराखंड में हेडक्वार्टर है। If I give you ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ है, you have not studied, I give you दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और उत्तराखंड, 99% people will either say दिल्ली और मुंबई, उनको लगेगा सरकारी कंपनी दिल्ली मुंबई में ही होगी, but the headquarters is Uttarakhand. Okay, now this is how examiner also builds tough questions for you. I'm just giving you an insight. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यही आएगा, बट आई एम टेलिंग यू हाउ टू स्टडी अ पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल, राइट। जितना ज्यादा आप ऐसे पढ़ेंगे
दिमाग खोल के कि यार ये चीज इंटरेस्टिंग है, ये तो पक्का पूछ सकता है वो, देन यू बिकम इंटरेक्टिव विद द सिलेबस एज वेल. तो वो हेल्प करता है इफ यू वांट टू डू दैट वे, राइट. You should talk to yourself when you're studying your study material. You should not read it. You talk to yourself. अच्छा ये पढ़ लेते हैं. मिशन वर्ल्ड क्लास बनना है सबका होता है. इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस ठीक है. ओएनजीसी एनर्जी बिजनेस से रिलेटेड हो गई. डोमिनेंट इंडियन लीडरशिप करनी है, सभी को करनी है, वो तो कॉमन है. कॉमन चीजें ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी, जो ऑफ बीट है ना वो पूछेंगे हमसे, राइट. यू इंटरेक्ट योर सेल्फ एंड बिकम्स ईजी फॉर यू. अगेन फिलोसफी पढ़नी है हमको, मिशन पढ़ना ही है हमको फॉर ऑल द कंपनीज, राइट. What I'll do is I'll stop here today. We'll start with Power Grid Corporation. ज्यादा बची नहीं है, हम P तक पहुंच गए हैं. अदानी A से शुरू किया था, P पावर ग्रिड पे पहुंच गए हैं. नेक्स्ट क्लास में 1 घंटा वी विल डू कंपनीज एंड नेक्स्ट 1 hour विच इज टुमारो वी विल डू अ क्विज. वी विल डू चैप्टर 1, 2 एंड 3 का क्विज करेंगे कल फॉर द नेक्स्ट 1 hour. फर्स्ट 1 hour वी विल डू द कंपनीज विच आर लेफ्ट, हो जाएंगी फटाफट. नाउ वी नो हाउ टू स्टडी. नाउ वी विल रश डबल द स्पीड कल, ठीक है. इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड कैसे पढ़ना है. कल हम बाकी कंपनीज फटाफट करेंगे. द सेकेंड 1 hour, राइट, द सेकेंड 1 hour वी आर गोइंग टू गो विद क्वेश्चंस. क्विज करेंगे चैप्टर 1, 2, 3 का. मिक्स हो जाएंगे सारे चैप्टर्स एंड आई विल गिव यू क्वेश्चंस, ओके, टू सॉल्व. यू गेट अ व्यू एग्जाम में कैसे आएगा, तो फिर और पढ़ने का मजा आएगा आगे, राइट. I will stop here for today and spend another 1 minute. I'm already 6 minutes over, but that's fine. 2 minutes और रुकेंगे, right? If you have any questions, any doubts, happy to solve. One, I'll see you tomorrow same time, and we'll do this chapter plus the quiz. Okay? Great. Quiz will be very helpful. Absolutely, it will be. If you do not have any doubts, you're free to go. We are wrapping up the session. Thank you for joining. For others, I'm staying for 2 minutes. Ask your questions. BCom first year exam March में होने वाला है. I have 1 month to study for exams. Manisha, you will have to manage. आपको देखने क्या important है. If you feel कि आप CA का 6 महीने आगे कर सकते हो, आप CA का 6 महीने बाद दे दो, पहले BCom के एग्जाम दे दो. Decide what suits you, right? You cannot get the best of everything. You have to decide what makes more sense at the point. आपको लगता है बीकॉम में दोबारा नहीं दे पाऊंगी, बट सीए तो मैं 6 महीने बाद भी दे सकती हूँ. गो फॉर बीकॉम, राइट. बीकॉम में तो 1 साल लग जाएगा अगर नहीं दोगे तो. थोड़ा स्मार्ट सोचना पड़ेगा आपको, और क्या. पुरंजय, your grandfather is retired from Power Grid. Awesome, right? अभी देखो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. You'll get to know where he used to work and what big company it was. कॉर्पोरेट बैंकिंग समझ नहीं आया एक्सिस बैंक में. मनीषा, कॉर्पोरेट बैंकिंग मतलब जैसे हमारे लिए बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, वैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जो बैंक काम करता है या सर्विसेज देता है, सबकी सैलरीज दे दो, 60 करोड़ 70 करोड़ की ट्रांजैक्शन, 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन, राइट. बड़ी बड़ी कंपनीज की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें कंपनी की हेल्प करते हैं, उसको कॉर्पोरेट बैंकिंग बोलते हैं. कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी का बैंक होता है वो. जैसे हमारा आपका बैंक है, मेरा बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या व्हाटएवर द बैंक इज. कंपनी का बैंक जो होता है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग कहलाता है. ओके, टफ क्वेश्चंस होंगे फॉर श्योर. देयर विल बी सम टफ क्वेश्चंस, देयर विल बी सम इजी क्वेश्चंस, मिक्स ऑफ बोथ. Absolutely, I'm also excited for tomorrow's quiz. All right, okay. Yes, exams are starting from 10th Feb. 10th Feb, 6 दिन तो बचे हैं. Starting from क्या आते हैं? You should say my exams have started from 10th Feb. Are starting के 6 दिन तो कुछ भी नहीं है, revision ही होगा बस. Great, Swati. I'm happy you enjoyed the session. ठीक है, तो if you can manage both college and CA, nothing like it, boss. Go for it. You're superhuman if you're managing. Perfect. All right. I'll see you tomorrow then. Bring some questions that you have. We'll complete this chapter and go with the quiz as well. Maza aayega kal. See you tomorrow, same time. Take care, guys. Thanks.